veng lui Aizawl zai oni bung hai south bung tlang le van la sia ti mun nuam te lo ngai thla ka tan aron thlan sak ani ladi kan ngai thak tak kha mi vanal rempui ren thlei sak ani a vikung tea west side zo omhar kabin in athan ani in hlan dot leya chuanin thiam chanti ralte in min hlan vela ti hla asakhi ania hela hi dikte ralte kortha veng pui in chong thani tenu pa sarai tenu pa ma dini omte zo kungi kortha le grace dami chinga veng te lo ngai thla ka tan thlan sakani a chuan vi kung te a west side zo omhar kabin vekhianin vl mangai zwali tui kwal not le wanal ngai zwali zema bo galili veng Aizawl ami te Aizawl ami le lalbiak diki to chong kanan veng le priscilla la nei thangi saron veng Aizawl mi te le ke ma tan min lo thlan sak ani don lung ka vei reng tring che isak mel mo ka tan thin lai kham tu
nang ang renga thin lai lụa tu tong lệ hiền cả in ring to to nè mo thin lai bua nang anh em mo mà ngày bia thu tim làm về là thiên lai ru cả tâm thầy to to nè thiên lai bua nắng anh em mò mà ngày bia thu tim lan về là ito na cả lan ngắm xì lâu mò in la thlan kan ngai thak ta kha min lan vela thiam chan tir ral de sak ani in la thlan dot leya chuan marina van shat puiwar te in all in te la sak hi ania he la hi pe ki zadeng kulikonin ma kung le wani upper republic lalomoi omi re ek veng lai le samuel c lal tan puya pol rang te lo ngai thak ta na thlan sak ani ngày lên rùa lung tổ sông tê khơi ăn choáng chê ủng in đam mô in chặt lang em zum khoa nung in hoa lăng ngà cắn lệ in tông lệ nghe đôn nhà ô cả chia ô cả una lên at lang chu dang ri ma se hun le ni liam chuan in ton le ni he chuak se kan hin na kan kim na ru na thing pui no dom le in o in tong le nghe o in na nghe hoa lai loài khi cần nú lệ gặp mang ngay cất chuông lệ qua đê mình về thiên o mong hồ in hin mô
thi na har ka ti min hu ti ro ka u le nau ke nge o ka chia o ka u nau le na tlang chu dang ri ma se hun le ni liam chuan in ton le ni her chuak se kan him na kan kim na ru la thing pui no dong le in o in tong le nge yan o in a nge lại thay trả chú lệ chi dùng môi yang ngắt thâu về lên phần cần ngoan in lên nát la cả lô hồ thoại đôn in tâm ni hết chuak lu xe càng ai chịu ô càng ai vòng vòng chịu ô cả chia o ka unau le na tlang chu dang ri ma se hun le ni liam chuan in ton le ni her chuak se kan hin na kan kin na ru na thing pui no dom le in o in tong le nge yan o in a nge kan ngai thak tak kha all in Marina Vanshat Puivar te sak ani in hlandot le atan chuanin ngulun za ma chak chuakin mindon vero ti la sakhiania he la hi vi kung te west side zo omhar kabin mi in Marine zo than pui mission veng le lalin moi chan mari west Aizawl lalbiak dikito chong kanan veng le Priscilla lal nei thangi saron veng Aizawl le keima ta na min lo thlan sak ani Ni riom lu nang ne na lim ten vua nang kumal le lai di te ton mang mai ang sang tur ki zong kapal ti bolo sin ma seren tang trang belin na riang hisiran min nol si mo lung di sam Zala tin king don hian kang ngai chual thin che sin ma se mo nang chua min don lu reng mutia min chon ta si a nang ngai wang luai thi nu la hun le ri kan man zum ten in tan chuan in sia reng hian nei mol si lo mo lung di sam mang chen zong tua ra har len rua lung tu zong ten min hem zo si lo leng dang to ra ten ten liam ma la sak mel tom
ta tung gió cho chi đầu chua in lung tung tu tra ngã chuan in lung tâm te in va ve ta la e cây sông mò khoa nu ruột ariang cắt chân hi bông dài relin Maria tên nu hlui liam nu ngai chung se linh kyang mai na nghe lung đi sang trên sông tua ra har lên rua lung tu sông tên min rèn dấu min don vero ngurlun zama chak chuak sak ani in hlatlan nung bertur tan chuan lalfam ki maral te in len tlang dang ti hla sakhiania hela hi OJH rami tuipang il ami in mangai luata te chung kwa zai te le chan te zong zong tung tuipang il party kuri diki ma puya newsia ha mi te longai thakata na thlan sak ani lắm lúa cả thui nghe mà tên ca tôn lung reng ôi lâu sắc mèo tôn lâu suy yang à say tur hi lên tan đâm cả tua dâu lâu len natlang dang in latlan kan ngai thlau nung ber kha lalfam ki maral te sak ani hei hi Akashvani Aizawl atanga puan ani chalai te huang tun chum chalai te huanga chuan general knowledge quiz kan ngai tha anga hudron mang tu tur te hi lalthang lian le achian te mission veng thang Aizawl mi te anni tu nei lo ngai thang u GK quiz nei na hun kan ron mang dona hun ron man pui tur che u hi lalthang lian le achian te mission veng thang kan ni a in mel shatir na hun lo mangila in quiz master tur hi lel ngai omi kan ni a kan researcher hi leldin liana ani a tun huna hian group pathumin kan in chenanga kan participants tur te hi in mel shatirna lo neila group thuma kan in chen do na chungte chu phunchong ainon le senshi ani anga phunchong a chang hian leldin sanga le lelrin chani ainon a changin mal som hlu ale leldin pui senshi a hian lel nunza ma le lel mal somite anni don ani
kan timekeeper tur hilal engkima ani atin kan scorer atan hian zo than tluanga ani don ani group tin hian zona chan nan hian second nga zel kan nei dona second nga atlina khanin kan timekeeper khanin bel aron metanga zona kan chan di kapyang khan group tin khan point som zel kan hmuton ani tuna chuan zona le chan na hun kan lo mang chananga zona kanin zo dan tur indot hi phunchong ainon le senchi in kanin zo don ani round 1 a hian Mizoram chung chanchin kanin zo tanga group tin in zona panga cheu kan chang don ani in zona te hi voi ni cheu karon char chhuak anga chumi zwa in huna in chan don ani phunchong group te in zona ma saber tur chu hei hi ani Mizoram state thingkung enge Mizoram state thingkung enge herse in zona chana adika point somin mu e ainon group te zona kanin zot chananga in zona pakhat na chu hei hi ani Mizoram chief minister masaber tunge Mizoram chief minister masaber tunge in huna in chane zo chunga in chana adika point som in mu ani senchi group te zona kanin zot chananga in zona masaber tur chu hei hi ani Mizoram atlang sang ber phong pui kha eng district ange a om Mizoram atlang sang ber phong pui hi eng district ange a om sia ha in chana adik lo tlat mei longtlai district a omani phunchong group te in zona panhina atan Mizoram hi engtik kuma nge state a hlankai ani Mizoram hi engtik kuma nge state a hlankai ani in huna in chane sangkhat zakua somriat pasari ainon group te in zona panhina chu hei hi ani Mizoram in mautam ahma chon kha engtik kum nge Mizoram in mautam ahma chon kha engtik kum nge sangkhat zakua somruk pakhat in chana adik lo tlat mei adik na chu kum sangkhat zakwa somnga pakwa ani senchi group te in zona panhina chu hei hi ani Mizoram chief minister ni rei ber tunge Mizoram chief minister ni rei ber tunge bulletin hola in chana adika point som in mu ani phunchong group te in zona pathumna chu hei hi ani Mizoram governor masaber tunge Mizoram governor masaber tunge ka fachiang talo nang she shibik lo mi pra pu ka chu ni si da wa in hun azawa in zona channa chu hei hi ani hiteswar sai kya ainon group te in zona pathumna chu hei hi ani Mizoram a hian district engzat nge om Mizoram a hian district engzat nge om som pakhat in channa adika point somin mu e century group te in zona pathumna chu hei hi ani Mizorama puk lian ber enge ni Mizorama puk lian ber enge ni in huna in chane puk jing in chana adika point som in mu e Phunchong group te in zona palina hei hi ani Mizorama Padmasri Award dong masaber tunge Mizorama Padmasri Award dong masaber tunge
soi liranin ka siya chang e soi lira in chan na adika point somin mu e ainon group te in zo na palina hi ani Mizorama chanchin bu chwa ma sakber kha enge Mizorama chanchin bu chwa ma sakber kha enge lai sui la tro mizo chanchin lai sui in chan na adika point somin mu ani Senshi group te in zona palina chu hi ani lian chiari lung len tlang hi eng district a nge a om lian chiari lung len tlang hi eng district a nge a om champhai in zona chan na adika point somin mu ani Punchong group te in zona pangana atan Mizorama Wildlife Sanctuaries engzan nge om Mizorama Wildlife Sanctuaries engzan nge om pasari nge paruk nge pariat ni so bang le pasari adik lautlat meya adik na chu pariat ani Ainon group te round 1 in zona hnung beratan Mizo zinga meiche IAS masaber kha tunge Mizo zinga meiche IAS masaber kha tunge el to chong PL to chong Senshi group te round 1 in zona hnung ber tur chu hi ani Mizo zinga MBBS zir chwak masaber tunge Mizo zinga MBBS zir chwak masaber tunge kasi to nya lo le in huna top tat meya azona chan na chu Dr. Tlang Loma ani Dr. Tlang Loma Tikhan round 1 a Mizoram chung zona le chan na hun kan hmang zawa group tin te point mu dan kha kan han soyanga Punchong group khan in point som thum an mu a Ainon group in point som li an mu a Senshi group in point som thum an mu ani Tuna chuan round 2 zona kanin zot chananga round 2 a hian India ram chung chanchin kanin zotanga group khat hianin zona panga zel chan tur kan nei dona group tin hianin point som zel kan chan dik chuan kan hmu don ani Senshi group te round 2 a in zona ma saber tur chu hi ani India Rama state te ber enge India Rama state te ber enge Goa in chan na adika point som in hmu ani Ainon group te round 2 a in zona ma saber tur chu hi ani Union Territory engzan nge om Union Territory engzan nge om pariat in chan na adika point som in hmu ani Punchong group te round 2 India ram chung zona le chan na a in zona ma saber tur chu hi ani Arunachal Pradesh khopui enge Arunachal Pradesh khopui enge Itanagar in chan na adika point som in hmu ani Senshi group te in zona pahni na chu hi ani India Rama mishing tamna berkha eng state nge India Rama mishing tamna berkha eng state nge Uttar Pradesh in chan na adika point som in hmu ani Ainon group te in zona pahni na chu hi ani kha si chong hi eng state in nge mang kha si chong hi eng state in nge mang
Meghalaya. In chan na adika point somin mu ani. Phunchong group te in zona panhi na chu hei hi ani. India Rama coffee thar chuak nim ber kha eng state nge. India Rama coffee thar chuak nim ber kha eng state nge. Tia Pradesh nge Karnataka ka. Karnataka. In chan na adika point somin mu ani. Senshi group te in zona pathum na chu hei hi ani. Father of Indian Constitution anti hi tunge. Father of Indian Constitution anti hi tunge. Dr. B.R. Ambedkar. In chan na adika point som in mu ani. Ainon group te in zona pathum na chu hei hi ani. India Ram President masaber tunge. India Ram President masaber tunge. Dr. Rajendra Prasad. In chan na adika point som in mu ani. Phunchong group te in zona pathum na chu hei hi ani. Elephant Falls hi khoyange a om. Elephant Falls hi khoyange a om. In huna in chane. Meghalaya. In chan na adika point som in mu ani. Senshi group te in zona pali na chu hei hi ani. ISRO Indian Space Research Organization hi khoyange a om. ISRO hi khoyange a om. New Delhi. In chan na adik lautlat meya a om na chu Bangalore ani. Ainon group te in zona pali na chu hei hi ani. India Rama State Retheiber enge ni. India Rama State Retheiber enge ni. In huna in chane. Tripura. In chan na adik lautlat meya a chan na chu Bihar ani. Phunchong group te in zona pali na chu India Ram Prime Minister masaber tunge. India Ram Prime Minister masaber tunge. Jawaharlal Nehru. In chan na adika point som in mu ani. Senshi group te round 2 a in zona nung ber tur chu hei hi ani. Ziak le chiar thiam tam na ber state enge ni. Ziak le chiar thiam tam na ber state enge ni. In hun a in chane. Kerala. In chan na adika point som in mu ani. Ainon group te round 2 a in zona nung ber tur chu hei hi ani. India Rama building sang ber enge ni. India Rama building sang ber enge. Pass. In hun azawa a chan na chu Lokhan Dwala Minerva ani. Phunchong group te round 2 India Ram chunga in zona nung ber tur chu hei hi ani a uluk takin lawngai thla ula sei de udona. India Rama Rail Kong Saber Vivek Express yan khoi achanga khoi thleng nge akal. India Rama Rail Kong Saber Vivek Express yan khoi achanga khoi thleng nge akal. Ishe. Avasheng hai lo ve ke po. Handris mai tu po avasheng lo ve. In hun azawa a chan na chu Dibrugarh achanga Kanyakumari ani. Tikhan round 2 a India Ram chunga zona le chan na hun chu kan hmang zawa in point mu dan chu het yang hi ani. Phunchong group 10 point som li, Ainon in point som thum, Senshi group 10 point som li ani a. Avaya round 1 le round 2 bel khoma kan point mu dan chu het yang hi ani.
Phunchong group 10 point somsari Ainon group 10 point somsari Senshi group in point somsari kan point mu ala inzat ve kani round 3 zona le chan na hun kan lo mang le anga round 3 ayan GK in zona kanin zot dona Ainon group te in zona masaber tur chu hei hi ani eng planet nge red planet tia an soi eng planet nge red planet tia an soi Mars. in chan na adika point som in mu ani Senshi group te round 3 GK round na in zona masaber tur chu hei hi ani eng planet nge blue planet tia an soi eng planet nge blue planet tia an soi Earth. in chan na adika point som in mu ani Phunchong group te GK round 3 a in zona masaber tur chu hei hi ani eng planet nge solar system a lian ber eng planet nge solar system a lian ber Jupiter. in chan na adika point som in mu ani Ainon group te in zona panni na chu e hei hi ani The Adventure of Tom Sawyer ti le khabu kha tu ziange The Adventure of Tom Sawyer ti le khabu kha tu ziange Mark Twain. in chan na adika point som in mu ani Senshi group te in zona panni na chu hei hi ani Khovela engchong mang tu nge tamber Khovela engchong mang tu nge tamber Mandarin. in chan na adika point som in mu ani Phunchong group te in zona panni na chu hei hi ani tu in nge typewriter mu chuak tu in nge typewriter mu chuak Shemi lo mo. in hun azawa a chan na chu William Austin Burt ani Ainon group te in zona pathum na chu hei hi ani computer hi tu mu chuange computer hi tu mu chuange Charles Babbage. in chan na adika point som in mu ani Senshi group te in zona pathum na chu hei hi ani tu in nge telephone mu chuak tu in nge telephone mu chuak Alexander Graham Bell. in chan na adika point som in mu ani Phunchong group te in zona pathum na chu hei hi ani Khovela thaler lian ber enge Khovela thaler lian ber enge Sahara Desert. in chan na adika point som in mu ani Ainon group te in zona pali na chu hei hi ani continent lian ber enge ni continent lian ber enge ni Asia. in chan na adika point som in mu ani Senshi te in zona pali na chu hei hi ani Khovela engkhiar kar nge lian ber Khovela engkhiar kar nge lian ber Greenland.
in chan na adika point som in mu ani phun chong group te in zo na pali na chu hei hi ani tunge USA president masaber tunge USA president masaber George Washington. in chan na adika point som in mu ani ainon group te GK round 3 a in zo na nung ber tur chu hei hi ani tunge meichia Mount Everest lon chuak masaber tunge meichia Mount Everest lon chuak masaber Shem. Mi pa ka chu ka Shem mo. in hun azawa a chan na chu Junko Tabei Japan mi ani Senshi group te round 3 GK round na in zo na nung ber tur chu hei hi ani Engram nge football world cup champion masaber Engram nge football world cup champion masaber in huna inchane Brazil ni em. in hun azawa a chan na chu Uruguay ani Phunchong group te round 3 GK round na in zo na nung ber tur chu hei hi ani Engramin nge le khabu print chuak masaber Engramin nge le khabu print chuak masaber in huna inchane Ishe ka van chiang lo India. in chan na adiklawa a chan na chu China ani round 3 GK round na kan point mu dan chu hetiang hi ani Phunchong group 10 point som thum Ainon group in point som li Senshi group in point som li ani a avaya round 1 2 le 3 bel khoma kan point mu dan chu hetiang hi ani Phunchong group 10 point za Ainon group in point za som Senshi group in point za som Round 4 a hian rapid fire round in zo na le chan na hun kan mang anga zo na som panga kan in zo tanga zo na pakhat hian point nga zel apu anga zo na pakhat chan nan hian second nga kan nei anga second nga chunga chang ma saber khanin point nga a mu anga kan point mu dan kha kan scorer hian lo chin chha le don ani Round 4 rapid fire round na zo na pakhat na chu hei hi ani engkumange United Nations din ani engkumange United Nations din ani in huna inchane Sang khat ko som nga Saka somli pa nga. Sangkha zakwa somli panga ti chan na kha adike Zona pani na chu tunge England meiche Prime Minister masaber tunge England meiche Prime Minister masaber Neville Anderson. Sarah McDonald. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher ti chan na kha chan na dikani e Zona pathumna Baku hi Engram capital nge Baku hi Engram capital nge Azerbaijan. Azerbaijan ti kha chan na dikani e Zona palina engtikni ange World Heritage Day man ani engtikni ange World Heritage Day man ani January ni somthum. March ni somni pakhat. October ni ni. December ni thum. in huna zawa in chana adikloveka a chana dik chu March ni somni pathumani eng sawange nungzonga thlok thei eng sawange nungzonga thlok thei Chong song. Vacha. Hummingbird. Hummingbird kha chana dik ani e Zona parukna engtika nge indo pui pani na achwa engtika nge indo pui pani na achwa Sang khat zakwa somli pasari. Saka zokwa somthum pakwa. Sangkha zakwa somthum pakwa kha adike
zona pasarina UNESCO headquarters hi khoyangi a om UNESCO headquarters hi khoyangi a om Mumbai, India, New York. Bangalore, London. Paris. Paris ti kha chan na dik ani e zona pariatna tunge father of economics in huna inchane Karl Marx, Woodrow Wilson, Adam Smith. kha chan na dik ani e zona pakwana Austriaram capital enge Addis Ababa, Vienna. Kalimpong, Vienna kha chan na dik ani e zona somna tu inge wings of fire le khabuziak APJ Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam kha chan na dik ani e zona som pakhatna Romeo and Juliet le khabu hi tu ziange Arundhati Roy, Shakespeare. William Shashi Tharoor, William Shakespeare kha chan na dik ani e zona som panina Khovela Louis Saber enge Brahmaputra, Mississippi. Nile. Nile kha chan na dik ani e zona som pathumna Khovela lemziak larber enge The Last Supper, Marilyn Monroe, Mona Lisa. kha chan na dik ani e zona som palina Mizoram district lianber enge Aizawl, Sersi, lunglei kha chan na dik ani e round 4 rapid fire round atana in zona hunhung ber tur chu hei hi ani India Rama thlona chumhmun airport lianber enge ni Subhash Chandra Bose International Airport, Indira Gandhi International Airport. Indira Gandhi International Airport kha chan na dik ani e round 4 rapid fire round zona le chan na hun kan hmang zawa kan point mu dan chu hetiang hi ani Phunchong group 10 point som ni panga Ainon group in point som Senchi group 10 point som thum panga kan hmu ani tikhan vo in ni a quiz manga zona le chana hun kan man chu kan mang zauta a kan score 10 point kan hmu dan an bel zauto a kan result chu hetiang hi ani point za som ni mu in Ainon group achangin mal som hlu ale lal din pui te pathum na an ni point za somli panga mu in lel nun za ma le lel nun tluangi Senchi group te pakhat na an ni point za somni panga mu in lel din sanga le lel rin chani Phunchong group te pahni na an ni e quiz hun kan buat sei chu kan lo zauta a alo ngai thlatu te in zawai chunga lom thu kan soye tuna kan ngai thak ta kha general knowledge quiz ani a hunran mang tu te kha lal thang lian ali achian te mission veng thang Aizawl mi te anni ole chuti sung chu tun chum chalai te huanga kan ngai thak ho thei te chu alo ni le ta a lal din pui kani a Akashvani Aizawl atanga puan chu ani hei hi Akashvani Aizawl ani chanchin thar langsar zual ilo ngai thang u Mizoram BJP President Puvanlal Muakan Mizoram Sarkar Pulal Duama Kaishwayin Central Sarkar Andor Loting Lole Ti Mipuiten Anshia Ati He Thu Hi Voina Aizawl Press Club Press Conference So Yin Puvanlal Muakachuan Chief Minister Pulal Duama Le Atho Puiten Sarkar Lai Puyan Dorin An Loting Lole A Khum Beule Mizo Puan Chishang Shang Pe Atha An Lak Pui Chu An Thlen San Ber Ani Ati BJP President Chuan State in Thana BJP Chu Ar Chuk Tui Lo Khopin Soichiat Ani A BJP in Lau Siang Na in vote zone thin ani ti so yin mizo mi puite chuan mason an du chuan an fin thiam atul ati Puvanlal Muaka chuan sarkar lai puya BJP ho tu tenen anin mu in Lok Sabha member a thlantlin ani chuan Mizoram mason na tur lian tam tak sarkar lai puin ati sakdon ati a Marchak state
president MP in thlanading chun ani ti soin thlantlin ani chuan central minister ani theidon ati a Lok Sabha MP pakhatin central sarkar do a hlok lo zia hre chiang tu chu MNF president puzoram thangale a thopui te an ni thu a soi BJP le Hindu soizom chu party dang ho ahla berani ti soin Christian minister aom theinan ama vote ling turin mi puite angen ani puwanlal hmuak a chuan thlantlin ani chuan Prime Minister scheme sang mi puiten tangkai zo ka an man theinan ma aladon ati a Mizoram BJP chuan mason na chu an ngai poimo ber ani ti soin Mizoram mason na chu sarkar lai puya ho tu ten an tiam ati bok state sarkar pulal doma kai shwayin central a engma soi chu an nei theilo ati a azin ho a press conference a po mason na tur an soi chu hun masallama malang na hlotlin na chau ani ti soin anjin na hlo chamlan na chu ZMC a chiang ani atibok ole chu ti jong chu tun tumata na chanchin tharlang sar zual gan han puan thei te chu anne ti hima ti beng vara ti sing thei tu ani ilung ngai na ilom na le inun phung atom pui the che ibula da dat la in tho pa in lim takin ngai ta thin te in chir lawang Hi Akashvani Aizawl ani tuna chuan pathian fakna hla kan ngai thla anga zonun moin minungram te hla sakhi ngai thla in kan hun in chan te ang Namu
minung ram kan ngai thak tak kha zo nun moi sak ani chu tlanga chuan han chol la ti in kan hunin chun zom te ang ar le ram chana Arsat naka Raile shing Liam the two Tâm lê ma se Xuân đâu ra Lô sáng sông tên Đi dài ăn rê See to la chuan han chuan la lấy sẽ o nụ tiếng chuan đi phật na la môi cho sai ba ang chuan
lalpan kan ma shruai kan ngai thak ta kha VL shruai thuang i sak ani min siam thar le ro ar laram chana za hian kan hunin chun zam vele thum de Lalpa min sia thar le
sao bay đông min lung ngai khó harin karum tree sam tu nem tu ga ngai swan tree bo bil na lo ga ra ka ding ring lol ba min sia thar le ro min siam thar le ro alaram chana sak ani ka som che zonun mo ye Shingun na itsam sung hiya enge idam chan le swala nung tur inilo Kristan itan atuar nakha chandam na alan to se Kasom se tu na nun lui kal san la nun thar Krista su van tat sok ang se Ishtim nun lo ral hunna kong e ikal ang le sa tuan shem mun sang tura lal pa Kristan apalo che du thana ita ani ikong so lai kha sut non le ro vagwan kapalo se kasom se tu na nun lui ka san la nun thar Krista su van tat zog ang se lali suan ma mo che atana mun turi atin lung thiang lim suan anagring che Ishtim nun lo ral hunna kong e ikal ang le sa tuan shem mun sang tura lal pa Kristan apalo che du thana ita ani ikong so lai kha sut non le ro vagwan kapalo che kasom se tu na nun lui ka san la nun thar Krista su van tat sok ang se kasom
cả lung ngay rít bún sông tây hi lăng ma khiến tôi mình xoay rồiช่วยรอกันไงทากตักข้าอาลรำชนะสักอันเนตุนจุมจันินปะเทียนฝักนั่นลากันไงทางนู้นเบรตูรตานชวนเจ้าหนุนโมยันจะตัวนุนนะตีลาอสักเฮียนจันินปะเทียนฝักนั่นลากันไงทางคนจูเอ็นเดตอบเตียงเมื่อกี้ดาริยัลเล่อาจารย์เวียอาจารย์จินทาร์เดลีมีหลักชนกันไงหลักชนสมดอนเนี่ยปะเทียนคงไงนาตานสนีโคเวลาลงนาก็ทรงทีนามาสิกามาปากพิลาสะตวนอาโบรัลนาเล่นวันดูสองเตเลนโคเวลปาร์มวยนักกันกันทีมาเซอาลิมนาอาเรซิโลรุ่นตูเรงอันโลอมโลควิซาอิสวาเจ้าฟังกินนากับโบจากนาจงเลกับสวาเตอาเพลงไฟตากันไงทากตักข้าจะตัวนุนนะสีจงนุนโมยิสักอันนี้ตัวนัดชวน
chan chin thar dali mi lak chon kan ngai thlave thung don ani in chau ti hara ti hima ti beng war ti ting thei tu ani ilungai नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली जी। नमस्कार विजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार प्रियंका। आगे बढ़े उससे पहले मुख्य समाचार जान लेते हैं। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से जारी। कल दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हराया। मीराबाई चानू ने IWF भारोत्तोलन विश्व कप में तीसरा स्थान हासिल कर पेरिस ओलंपिक के लिए जगह पक्की करने वाली एकमात्र भारोत्तोलक बनी। सुमित नागल ने ATP टेनिस सिंगल्स रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 95वीं रैंकिंग हासिल की और 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में महिला और पुरुष वर्गों का खिताब महाराष्ट्र ने जीता। और सबसे पहले बात आईपीएल क्रिकेट की। मुंबई में इस समय आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर में 5 विकेट पर 76 रन बना लिए हैं। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अभी फिलहाल जिस हिसाब से मुंबई इंडियंस खेल रही है और एक इनके रन पे 2 विकेट चले गए थे शुरुआत में ही, तो लग नहीं रहा कि अपना खाता खोल पाएगी जीत का। जी हाँ, अगर देखिए पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं। दोनों मैच हार चुकी है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और राजस्थान रॉयल्स दोनों मैच जीत चुकी है अपने। तो मुकाबला अच्छा होना चाहिए। हालांकि आपने जैसे बताया 5 विकेट गिर गए हैं, पर आखिरी के 5 ओवर्स में भी अगर एक 50-60 रन ऐसे आ जाते हैं तो थोड़ा सा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि शायद कॉम्पिटेटिव हो जाए। लेकिन इस वक्त तो राजस्थान रॉयल्स आराम से लग रहा है कि जीत जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि रोहित शर्मा भी खाता खोले बिना चले गए, नमन धीर भी 0 पे आउट और ब्रेविस भी 0 पर आउट हो गए। तो हमारे कप्तान जैसे अगर कह सकते हैं कि ईशान किशन जो है वो 16 रन बना सके बस। जी हाँ, और आपको थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा इसमें। न्यूजीलैंड के जो ट्रेंट बोल्ट हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉल डाला। हाँ, भारतीय बल्लेबाज वैसे भी लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आज जिस ढंग से उन्होंने 2 विकेटें निकाली, बॉल को थोड़ा स्विंग करके ऑफ द पिच जो है उन्होंने सीम किया, तो उनकी बॉलिंग से बहुत फर्क पड़ा। ये 3 विकेट ले चुके हैं अब तक। उन्होंने रोहित की ले ली, नमन धीर की ले ली और ब्रेविस की भी विकेट ली। और सबसे बड़ी बात है सिर्फ 14 रन दिए उन्होंने। जी हाँ, और वो माने जाते हैं। मतलब अगर आप देखें दुनिया भर में उनका अपने एक स्थान है जहाँ पे वो टेस्ट मैचेस में भी अच्छी बॉल डालते हैं। और जो सबसे कठिन है, जो T20 में बॉल डालना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पे भी ट्रेंट बोल्ट ने अपना बहुत नाम कमाया। इस बार देखा जाए तो जो मुंबई इंडियंस की टीम है वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही नाकाम रही है। एक तिलक वर्मा है जो 2 मैच में 89 रन बना सके हैं, बाकी तो कुछ खास नहीं कर पाई। हाँ, तिलक वर्मा तो मतलब कह रहे हैं पुराने प्लेयर्स जितने एक्सपर्ट्स हैं कि आगे के टाइम के लिए तिलक वर्मा एक बड़े खिलाड़ी उभर के आएंगे। जैसे गिल हम देख रहे हैं और काफी यंगस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन जिसमें तिलक वर्मा का नाम बहुत आगे है। जी, और अब कल के मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने कल शाम विशाखापट्टनम में चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 191 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स जवाब में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन ही बना सकी। तो अगर कल देखें तो दिल्ली ने आखिरकार अपनी पहली जीत दर्ज कर ही ली और रंग में पंत लौट आए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट था जो
कि ऋषभ पंत किस ढंग की वापसी करते हैं। उन्होंने सबका मन जीत लिया है। देखिए एक्सीडेंट के बाद बहुत मेहनत करके रिहैब में उन्होंने अपने आप को संवारा और तैयार हुए हैं ये बड़ी क्रिकेट खेलने के लिए। और उन्होंने अपने जो उनके फैंस हैं उनको निराश नहीं किया, अपनी टीम को निराश नहीं किया। खास करके जो कोच है रिकी पॉन्टिंग, वो हमेशा से उनको ये था कि ऋषभ पंत जरूर खेलेंगे आईपीएल में। वो तैयार भी हो गए, अच्छी परफॉर्मेंस की और दिल्ली के इस जीत में बड़ा योगदान था। बिल्कुल, पंत ने आपको बता दें कि 91 रन की पारी खेली। इसके अलावा डेविड वार्नर ने सबसे अधिक 52 रन बनाए। और अगर बात करें खलील है जिन्होंने विकेट्स लिए, 2 विकेट लेकर 21 रन दिए और मैन ऑफ द मैच रहे। हाँ, खलील देखिए एक टाइम ऐसा था करीब 4 साल पहले कि बहुत कहा जाता था कि ये भारत के लिए खेलेंगे, रेगुलरली इंडियन टीम में रहेंगे। थोड़ा सा उनकी इंजरीज के इश्यू हो गए, पर ये अच्छी वापसी की है उन्होंने। और आपने जैसे बताया डेविड वार्नर, वो तो किसी भी फ्रेंचाइजी के प्रिय खिलाड़ी हैं क्योंकि हमेशा कंसिस्टेंटली वो रन बनाते हैं। कल का अगर मतलब पर्टिकुलरली मैच देखें तो चेन्नई के प्लेयर्स थे, सलामी बल्लेबाजों की बात करें तो चाहे ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान हो और रविंद्र हो, दोनों ही नहीं चल पाए। 1 रन और 2 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ, चेन्नई के एक्चुअली क्या है, उनके जो फैंस हैं वो बड़े खुश होते हैं जब धोनी रन बना लेते हैं कि वो चाहते होंगे कि मैच तो जीतें। पर शुरुआत जब खराब हुई, जिस ढंग से मैच पकड़ा दिल्ली ने, तो मैं समझता हूँ उस दिन जो अच्छी टीम खेली वो जीती। और जरूर चेन्नई के फैंस बहुत निराश रहे होंगे क्योंकि इस टूर्नामेंट में सबसे अगर कोई कंसिस्टेंट टीम रही है वो है चेन्नई। और अगर देखा जाए तो अगर ओवर्स रहते, क्योंकि नाबाद रहे धोनी, और अगर उनको शायद और बॉल्स मिलती तो शायद मैच पलट भी सकता था। हाँ, धोनी तो देखिए ऑल टाइम फेवरेट है सब जो पुराने जिन्होंने क्रिकेट देखा है। 2 वर्ल्ड कप जितवाए हैं उन्होंने एज कैप्टन, तो धोनी सबके प्रिय खिलाड़ी हैं। और जब भी वो आते हैं मैदान में, आप देखिए ऐसे एक्साइटमेंट होती है, चाहे आपकी टीम के लिए खेल रहे हो या वो दूसरी टीम के लिए खेल रहे हो। पावर प्ले में भी चेन्नई की कोई जो बॉलर्स थे, पावर प्ले में एक भी गेंद नहीं ले पाए, विकेट नहीं ले पाए। जी हाँ, कैपिटल्स का। जी हाँ, पावर प्ले बड़ा चैलेंजिंग होता है और हमेशा आपको नहीं मिलेंगे पावर प्ले में। और आपको बता दें कि कल बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। और वेट लिफ्टिंग के हमारे कह सकते हैं कि क्षेत्र से बहुत अच्छी खबर मिल रही है। मीराबाई चानू ने IWF भारोत्तोलन विश्व कप में आज थाईलैंड में महिलाओं के ग्रुप बी में 49 किलो भार वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। इस जीत के साथ ही वे पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की एकमात्र भारोत्तोलक बन गई हैं। मीराबाई ने कुल 184 किलोग्राम भार उठाया। ये पेरिस ओलंपिक के लिए अंतिम और अनिवार्य क्वालिफाइड टूर्नामेंट है। हालांकि क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की आधिकारिक घोषणा विश्व कप के समापन के बाद होगी। प्रत्येक भार वर्ग से शीर्ष 10 भारोत्तोलक पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। और अगर देखा जाए, मीराबाई चानू 6 महीने बाद वापसी करती हैं चोटिल होने के बाद। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता रही हैं, तो बहुत ही एक अजीब सा, एक बहुत आत्मविश्वास पैदा करने वाली है आज की जीत। बिल्कुल। और देखिए टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जो उन्होंने पहले दिन, आपको याद होगा, सिल्वर जीता, वहां से पूरे कंटिंजेंट में खुशी की लहर दौड़ी और बड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। आगे जाके हॉकी महिलाओं ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता। पर मैं समझता हूं सबसे खास चीज ये है कि जैसे ये चोटिल हुई और जिस ढंग से वापसी की है, बहुत कड़ी मेहनत की है। विजय कुमार जो उनके कोच है, उन्होंने बहुत मेहनत की है मीराबाई के साथ। और इस पेरिस ओलंपिक्स में उनकी बड़ी उम्मीद है, उनको पूरा भरोसा है कि मेडल जीतेंगी। अगर आप देखें रैंकिंग में भी ऊपर हैं, रैंकिंग के हिसाब से तो उनको मेडल मिलना चाहिए। लेकिन उस दिन आप कैसे परफॉर्म करते हैं वो अलग बात। पर अगर मीराबाई फिट रही तो प्रियंका वो जरूर मेडल लेके आएंगे। एक और मेडल हम उनसे मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
टेनिस कोर्ट की बात, टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने हाल में प्रभावशाली प्रदर्शन के जरिए एटीपी सिंगल्स रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 95वीं रैंकिंग हासिल कर ली है। नागल की इससे पहले सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 97 थी। देखा जाए तो सुमित नागल ने एटीपी चैलेंजर स्तर की प्रतियोगिता जैसे जो चेन्नई ओपन जीतने के बाद ये स्थान हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया ओपन के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई थी तो सुर्खियां बटोरी थी। इस प्रतियोगिता में वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय बने और लगातार अगर आप देखें उन्होंने जो प्रोग्रेस किया है, उनको सपोर्ट कम मिल रहा था, फिर एक स्टेज ऐसा है कि उनको सब तरफ से उनको सपोर्ट मिला, मॉनिटरी बोलिए और दुआएं दी लोगों ने, और उन्होंने दिखा दिया कि वो इस लीग को बिलोंग करते हैं। जी हाँ। और हॉकी के मैदान की बात करते हैं। हॉकी इंडिया ने बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण में आकलन शिविर के लिए 60 सदस्यीय महिला टीम की आज घोषणा की। यह शिविर 7 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 6 और 7 अप्रैल को आगामी कोचिंग शिविरों और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन दौरों के लिए टीम में से 43 खिलाड़ियों की छंटनी होगी। पुणे में हाल ही में संपन्न सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बाद 60 खिलाड़ियों की ग्रुप को छांटा गया है। वे भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए अंतिम 33 सदस्यीय कोर संभावित ग्रुप में जगह बनाने की दौड़ में हैं। फिलहाल नए मुख्य कोच की नियुक्ति से पहले सभी खिलाड़ी महिला हॉकी टीम की कोच अंकिता बीएस को रिपोर्ट करेंगी। जो आज जो घोषणा हुई है उसमें गोलकीपर सविता पुनिया और फॉरवर्ड खिलाड़ी वंदना कटारिया जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हैं। और पेरिस ओलंपिक में जिस तरह से हम क्वालिफाई करने में विफल रहे तो उसके लिए देखा जाए तो एक नए सिरे से टीम तैयार करने की कोशिश है। हाँ, आपको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी हैं ना। ओलंपिक्स छोड़ के एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, या मान लीजिए एशियन चैंपियनशिप्स हैं। बहुत टूर्नामेंट्स हैं जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं। और जैसे आपने बोला ये एक बड़ा सेटबैक था जो अगर आप पेरिस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म किया था आपने टोक्यो में, तो थोड़े 1-2 मैचेस बहुत खराब खेले, वो उससे जो है उनको बहुत फर्क पड़ा। और अब बात करते हैं खो खो की। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में महिला और पुरुष वर्गों का खिताब महाराष्ट्र ने जीत लिया है। दिल्ली में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र ने रेलवे को रोमांचक मुकाबले में 52-50 से हराया। महिला वर्ग में भी महाराष्ट्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 18-16 से पराजित किया। और आई लीग फुटबॉल की बात करते हैं तो आई लीग फुटबॉल में नामधारी एफसी और आइजॉल एफसी के बीच आज मैच 1-1 गोल के साथ ड्रॉ रहा। सभी भारतीय खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरी आइजॉल ने 40वें मिनट में आर रामदीन थारा के गोल से बढ़त बना ली। टीम लंबे समय तक बढ़त बनाए रखने में सफल रही, लेकिन स्पेन के स्ट्राइकर इवान गैरिडो ने मैच के 85वें मिनट में गोल कर नामधारी एफसी की वापसी कराई। गैरिडो ने लगातार दूसरे मैच में टीम के लिए गोल किया। इस ड्रॉ के साथ आइजॉल 21 मैचों में 25 अंकों के साथ तालिका में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। नामधारी 23 मैचों में 24 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है। तो आज जो देखा जाए मैच काफी रोमांचक रहा। लास्ट मोमेंट तक ऐसा लगा था कि कौन शायद आइजॉल एफसी जीत जाए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे गोल कर दिया नामधारी। जी हाँ, एक्चुअली हॉकी में ऐसा होता है कि आपको आखिरी के 5 सेकंड में भी आपको रेडी रहना पड़ता है, और फुटबॉल में भी यही है। फुटबॉल में आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, खास करके जो आखिरी के 5 मिनट होते हैं उसमें आपका स्टैमिना, आपका जो आपकी ताकत है दौड़ने की, वो टेस्ट होती है। तो यहाँ पे अगर आप चूक गए तो आप हारेंगे, जैसे आज ये मैच में हुआ। बिल्कुल। और आपको बता दें कि कल श्रीनिधि डेक्कन एफसी ने राजस्थान यूनाइटेड पर 6-1 की बड़ी जीत से खुद को खिताब की दौड़ में बनाए रखा है। और अब जाते जाते आपको मियामी ओपन टेनिस की खबर देते चलते हैं। इटली के जेनिक सिनर ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-3, 6-1 से हराया। सिनर 2021 और 2023 टूर्नामेंट के उप विजेता रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और रॉटरडैम के बाद उनका इस साल का ये तीसरा खिताब है। मियामी ओपन जीतने वाले वे पहले इटालियन खिलाड़ी हैं। इससे पहले भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडन ने ऐतिहासिक पुरुष डबल्स खिताब जीता था। मतलब लगातार रोहन बोपन्ना तो
उपलब्धियां ही हासिल करते जा रहे हैं। हाँ, और वो बता रहे हैं कि वो अभी भी जवान हैं। जी हाँ। तो श्रोताओं, और अब आपको जाते जाते एक बार फिर से आईपीएल का जो मैच चल रहा है मुंबई इंडियंस का और राजस्थान रॉयल्स के बीच, उसकी जानकारी देते चलते हैं। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 14वें ओवर में 6 विकेट पर 95 रन बना लिए। 7 विकेट अब आउट हो गए हैं, तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुंबई इंडियंस के लिए आज भी जीत का खाता खोलना। समय कह रहा है आपसे विदा ली जाए। विजय जी, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत का रक्षा निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में 32% से अधिक की वृद्धि। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में तूफान से हुए भारी नुकसान के बाद वहां के मुख्यमंत्रियों से बात की। श्री शाह ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में जून तक लू के ज्यादा दिन चलने का अनुमान व्यक्त किया। और खेलों में मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की पहली भारोत्तोलक बनी। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्ष 2023-24 में देश का रक्षा निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि रक्षा निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 32% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने भारत के रक्षा साजो सामान के निर्माण और निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों समेत देश के रक्षा उद्योग ने हाल के वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है। श्री सिंह ने रक्षा निर्यात में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए सभी हितधारकों को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में तूफान से हुए भारी नुकसान के बाद वहां के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि वो तूफान के कारण हुए गंभीर नुकसान से बेहद चिंतित हैं। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत के आदेश से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई धार जिले के इस परिसर में खुदाई कर रहा है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और पीके मिश्रा की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि एएसआई के सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्रवाई अदालत की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि विवादित स्थल पर खुदाई इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि इसकी मूल संरचना में कोई बदलाव आ जाए। इसके अतिरिक्त अदालत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर भी नोटिस जारी किया है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा एएसआई को विवादित स्थल भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। हिंदू एएसआई द्वारा संरक्षित 11वीं सदी के स्मारक भोजशाला को वाग देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। सर्वोच्च न्यायालय ने वाराणसी अदालत के 31 जनवरी के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें हिंदू समुदाय को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा की अनुमति दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला तथा मनोज मिश्र की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को आदेश दिया कि वे ज्ञानवापी परिसर में यथास्थिति बनाए रखें ताकि दोनों समुदाय वहां धार्मिक प्रार्थना कर सकें। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना दोनों पक्षों में से कोई भी यथास्थिति को भंग नहीं करेगा।
वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल राजस्व इस वर्ष के मार्च में वार्षिक आधार पर 11% की बढ़त के साथ 1,78,000 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ। मार्च सबसे अधिक जीएसटी संग्रह वाला दूसरा महीना रहा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि घरेलू लेन देन में 17.6% की बढ़त से जीएसटी संग्रह में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह का मासिक औसत 1,68,000 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले वित्त वर्ष के 1,50,000 करोड़ रुपए के औसत से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इस साल मार्च में जीएसटी राजस्व का शुद्ध रिफंड 1,65,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 18.4% अधिक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। देश में आगामी 2-2.5 महीने में अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर आज नई दिल्ली में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी के बीच आम चुनावों को देखते हुए राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों ने इस संबंध में व्यापक तैयारी की है। हीट वेव के समय में कम से कम लोगों को नुकसान हो, इसको व्यवस्था के लिए तैयारी की हुई है। हीट वेव को रोकने के लिए स्टेक होल्डर से राज्य सरकारों के साथ मिलकर के मेरे अध्यक्षता में 2 दिनों का बैठक हुई। उसमें पूरा तैयारी कैसे कैसे किया है उसका एक पेशकश की गई है और आगे और क्या करना चाहिए इसका भी एडवाइजरी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने देश के मध्य उत्तरी मैदानी इलाकों और दक्षिणी हिस्से के कई इलाकों में इन गर्मियों में अधिक समय तक लू चलने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून के बीच अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में गर्मी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है। अप्रैल में भी देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। हालांकि देश के पूर्वी, पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम हिस्से के अलग अलग इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य और इससे नीचे रहेगा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से सांसद अनुभव मोहंती आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी में शामिल किया गया। श्री मोहंती ने हाल ही में बीजू जनता दल से त्यागपत्र दिया था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण भारत में इसका महत्व ज्यादा है। इसका श्रेय यहाँ के लोगों के अमूल्य योगदान को जाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत में चुनाव आम लोगों के लिए सिर्फ वोट डालने का नहीं बल्कि उत्सव का क्षण होता है। पिछले 7 दशकों में राष्ट्र एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में उभरा है, जहां प्रत्येक व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। इसकी एक झलक देखने को मिली महाराष्ट्र के भिवंडी निर्वाचन क्षेत्र की कविता ठाकरे की कहानी में। कविता अपनी शादी के दिन लापता हो गई, जिससे उनका परिवार चिंतित हो गया। परिवार ने तब राहत की सांस ली जब वो वोट डालकर वापस लौटी। कविता ने शादी से पहले वोट डालने को तरजीह दी, जो उनके न केवल नागरिक कर्तव्य की गहरी भावना को दर्शाता है बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी बताता है। कविता जैसे अन्य जिम्मेदार नागरिकों ने ही भारत के जीवंत लोकतंत्र की कहानी को आकार दिया है। ऐसी कहानियां न केवल लोगों को गर्व की भावना से भर देती हैं बल्कि ये राष्ट्र निर्माण में हर एक वोट की ताकत को भी दर्शाती हैं। नई दिल्ली से आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्गेश भदौरिया। जम्मू कश्मीर में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन में भागीदारी स्वीप अभियान के तत्वावधान में आज डोडा के सहायक चिकित्सा प्रशिक्षण स्कूल ANMT में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मतदान संबंधी गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदार बनाना है। मिजोरम में मुख्यमंत्री लालदूहोमा ने कहा है कि उनकी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेगी। लालदूहोमा ने आइजोल में वनपा हॉल में जोरम पीपल्स मूवमेंट जेडपीएम के उम्मीदवार रिचर्ड वानलाल हमंगैया के चुनाव अभियान की शुरुआत की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिचय श्रृंखला में आज प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट, जहां इस महीने की 19 तारीख को मतदान होना है। 4 उधमपुर संसदीय क्षेत्र भारत का सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्र है। इस निर्वाचन क्षेत्र में जम्मू संभाग के 5 जिले आते हैं, जिनमें कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले शामिल हैं। इस संसदीय क्षेत्र की आबादी 24 लाख से अधिक है और निर्वाचन क्षेत्र में कुल 16,74,277 मतदाता हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने वाले कुल 15 उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और प्रेमनाथ, बहुजन समाज पार्टी से अमित कुमार और तिलकराज, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से पूर्व मंत्री जीएम सरूरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह और दिव्य सूर्य प्रताप सिंह, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजी पार्टी से राजेश मनचंदा और डॉक्टर पंकज शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। नामांकन पत्र की गहन जांच के बाद 28 मार्च 2024 को 3 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी विभिन्न कारणों से रद्द कर दी गई। इनमें बीजेपी से प्रेमनाथ, बीएसपी से तिलकराज और कांग्रेस से दिव्य प्रताप सिंह शामिल हैं। अब 4 उधमपुर संसदीय क्षेत्र के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के कुल 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसके लिए मतदान पहली चरण में 19 अप्रैल को होना है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं गुलशन रैना। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग से आज रात प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है आयकर रिटर्न प्रक्रिया का सरलीकरण। आयकर आयुक्त धर्मवीर सिंह और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव नारायण श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता आयकर रिटर्न भरने, नई और पुरानी कर प्रणाली और अन्य संबंधित विषयों को लेकर प्रश्न पूछ सकेंगे। यह कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान श्रोता इन टेलीफोन नंबरों पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं 01123421050 और 01123314444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, जिसका नंबर है 9289094044। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मीराबाई चानू ने IWF भारोत्तोलन विश्व कप में आज थाईलैंड में महिलाओं के ग्रुप बी में 49 किलोग्राम भार वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। इस जीत के साथ ही वे पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की एकमात्र भारोत्तोलक बन गई हैं। मीराबाई ने कुल 184 किलोग्राम भार उठाया। मीराबाई ने पेरिस ओलंपिक के लिए तय मानदंड पूरे कर लिए हैं। यह पेरिस ओलंपिक के लिए अंतिम और अनिवार्य क्वालिफायर टूर्नामेंट है। हालांकि क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की आधिकारिक घोषणा विश्व कप के समापन के बाद होगी। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 16वें ओवर में 7 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आज तोशाखाना भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को दी गई 14 वर्ष की सजा को निलंबित कर दिया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल एक दिन के दौरे पर कर्नाटक जाएंगे। इस दौरान श्री शाह सुबह शक्ति केंद्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का रक्षा निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के पार। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 32% से अधिक की वृद्धि। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में तूफान से हुए भारी नुकसान के बाद वहां के मुख्यमंत्रियों से बात की। श्री शाह ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में जून तक लू के ज्यादा दिन तक चलने का अनुमान व्यक्त किया। और खेलों में मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की एकमात्र भारोत्तोलक बनी। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. India's defence export crosses 21,000 crore rupee mark for the first time, grew over 32% in 2023-24 financial year. Home Minister Amit Shah speaks to Chief Ministers of West Bengal, Assam and Manipur after storm hits the states, assures all assistance. IMD forecasts more number of heatwave days in most parts of the country until June. In sports, Mirabai Chanu becomes the only Indian weightlifter to qualify for Paris Olympics. And in cricket, match underway between Mumbai Indians and Rajasthan Royals at Mumbai. Raksha Mantri Rajnath Singh has said for the first time the country's defence exports have crossed the 21,000 crore rupee mark in 2023-24. In a social media post, Mr. Singh said the defence export has witnessed a spectacular growth of more than 32% over the previous fiscal year. He said the Defence Ministry has taken several initiatives to spur India's defence manufacturing and exports. The minister said the country's defence industries, including the private sector and defence public sector undertakings, have registered a commendable performance in recent years. Union Home Minister Amit Shah today spoke to the Chief Ministers of West Bengal, Assam and Manipur after the severe loss suffered due to a storm in these states. He assured them of all possible assistance. In a social media post, Mr. Shah said he is deeply concerned about the severe loss suffered due to the storm. He also extended condolences to the families of the deceased and prayed for the swift recovery of the injured. Prime Minister Narendra Modi has said India needs to become economically self-reliant in the next 10 years so that the nation is not impacted much by global factors. Speaking at the commemoration ceremony of 90 years of the Reserve Bank of India in Mumbai today, the Prime Minister said the transformation of the Indian banking sector is a case study. He said the banking sector has become profitable and credit growth has been increasing due to the steps taken by his government and the RBI in the last decade. A Delhi court today sent Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal to judicial custody till the 15th of this month in the money laundering case related to the alleged liquor policy scam. The AAP leader was arrested on the 21st of March by the Enforcement Directorate. Special CBI Judge Kaveri Baveja of the Rouse Avenue Court passed the order after Chief Minister Kejriwal was produced in court on the expiry of his ED custody. Earlier, on the 22nd of last month, the trial court remanded him to 6 days of ED custody, which was further extended by 4 days. The Supreme Court today refused to put a stay on the scientific survey of the disputed Bhotshala and Kamal Mola Mosque complex located in Madhya Pradesh's Dhar district. The excavation process is currently going on at the complex in the district as part of the court-mandated survey being conducted by the Archaeological Survey of India. A bench of Justices Rishikesh Roy and P.K. Mishra in an interim direction said no action should be taken without its permission on the basis of the outcome of the ASI survey. It also clarified that no physical excavation should be taken in disputed sites, which will change its character.
Earlier on the 11th of March, the High Court's Indore bench had ordered the ASI to conduct a scientific survey of the medieval-era Bhotshala structure in the Dhar district. In another matter, the Apex Court today refused to stay the Varanasi court order of the 31st of January by which Hindu parties were allowed to hold puja in the southern cellar of the Gyanvapi Mosque. A bench of Chief Justice of India, CJI D.Y. Chandrachud, with Justices J.B. Pardiwala and Manoj Mishra, however, ordered the parties to maintain status quo at the Gyanvapi premises to enable both the communities to offer religious prayers. This arrangement will continue till the case is finally decided. Elections are the cornerstone of any democracy, and in the case of India, which is the world's largest democracy, their significance is unparalleled. The sheer magnitude of conducting such a monumental exercise every 5 years is a feat in itself, yet India consistently achieves it with success. Our correspondent brings you an interesting anecdote of this festival of democracy. India boasts one of the most engaged and participatory populations when it comes to electing their representatives. In the first general election in 1952, a young electorate decorated ballot boxes with flowers and vermilion, treating them as objects of worship. Over the past 7 decades, the nation has evolved into a mature democracy where each individual understands their role and responsibility while actively participating in the electoral process. This is truly reflected in the story of Kavita Thakre from the Bhiwandi constituency of Maharashtra. On her wedding day, Kavita went missing, causing anxiety for her family. It was only when she returned with her finger inked that they breathed a sigh of relief. Kavita's selfless decision to postpone her wedding celebrations momentarily to cast her vote not only reflects her deep sense of civic duty, but also her commitment to democratic principles. This is Durgesh Bhadoria for Akashvani News, Delhi. The Union Territory of Jammu and Kashmir has a total of 5 parliamentary constituencies. Out of these 5 constituencies, 2 are located in Jammu Division and 3 fall in the Kashmir Division. The Jammu Division of the UT has 2 parliamentary constituencies, Jammu Parliamentary Constituency and Udhampur Parliamentary Constituency, which covers a total of 8 districts of the Union Territory out of the 20 districts. The Udhampur Parliamentary Constituency will go to poll in the first phase on April the 19th, for which 12 candidates are in the fray. A report. The 4 Udhampur parliamentary constituency is the most developed constituency in India, and it has seen tremendous development in the last 9 years. This constituency covers 20,230 square kilometers of mountainous Himalayan terrain. The constituency covers 5 districts of Jammu division, including Kathua, Udhampur, Doda, Kishtwar and Brahman. The population of the parliamentary constituency is over 24 lakhs, and there are a total 16,74,277 electorates in the constituency. The constituency has 18 assembly segments and 2,637 polling stations. This constituency has earned its name in the country and world as the birthplace of Purple Revolution, which has given birth to agri-tech startups not only in J&K but across India. Now there are 12 candidates from different political parties and independent in fray for the 4 Udhampur parliamentary constituency, polling for which is scheduled in the first phase on April 19, 2024 from 7 a.m. to 6 p.m. This is N. Gulshan Rana for Akashvani News, Jammu. Kendrapada MP Anubhav Mohanty today joined the BJP. He was inducted into the party in the presence of BJP General Secretary Vinod Tawade at party headquarters in New Delhi. Mr. Mohanty had recently resigned from the BJD. The meeting of BJP's Election Manifesto Committee was held at party headquarters in New Delhi today. The committee deliberated upon the party's manifesto for the ensuing Lok Sabha polls. It was the first meeting of the 27-member committee headed by senior BJP leader and Union Minister Rajnath Singh. Senior party leader and Union Minister Nirmala Sitharaman is the convener of the panel. On the other hand, the Congress Central Election Committee was also held in New Delhi to decide the name of the candidates for the Lok Sabha elections in Telangana. On the other hand, Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar campaigned in Mandya today after Congress candidate Venkataramane Gowda filed his nomination. Janata Dal Secular State President H.D. Kumaraswamy is the rival candidate of Mr. Gowda. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our Twitter handle at AIR News Alerts. Lok Nirnay 2024. A special program on the general elections every evening at 7 and repeat broadcast at 9:30 p.m. on Akashvani Gold. Updates of election activities, insights from regions and constituencies,
expert opinion and analysis. In the world's largest festival of democracy. Stay tuned to Lok Prasarak ke saath Lok Nirnay 2024. Welcome back. You are listening to the news at 9. The country is anticipated to experience extreme heat wave conditions in the upcoming 2.5 months. Briefing media in New Delhi today, Union Minister for Earth Sciences Kiran Rijiju said he had a useful meeting with stakeholders in view of the upcoming elections amid the prediction of extreme heat. हीट वेव के समय में कम से कम लोगों को नुकसान हो इसको व्यवस्था के लिए तैयारी की हुई है। हीट वेव को रोकने के लिए स्टेक होल्डर से राज्य सरकारों के साथ मिल करके मेरे अध्यक्षता में 2 दिनों का बैठक हुई। उसमें पूरा तैयारी कैसे कैसे किया है उसका एक पेशकश की गई है और आगे और क्या करना चाहिए इसका भी एडवाइजरी जारी किया गया है। Director General of India Meteorological Department Dr. Mrityunjay Mohapatra said a longer number of heat wave days this summer in many areas of central, northern plains and southern part of the country. He said the maximum temperature between April and June is likely to remain above normal. Dr. Mohapatra said Gujarat, Central Maharashtra, North Karnataka, Rajasthan, Madhya Pradesh, Odisha, North Chhattisgarh and Andhra Pradesh are likely to experience the worst impact of heat waves. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has launched a new and more user-friendly version of its complaint redress system, Scores 2.0. It said the new version of Scores will make the process more efficient through auto-routing, auto-escalation, monitoring by the designated bodies, and reduction of timelines. The SEBI said the timeline for redressal of complaints has been reduced to 21 calendar days. The gross goods and services tax revenue for March this year has witnessed the second highest collection ever at 1,78,000 crore rupees with an over 11% year-on-year growth. Union Finance Ministry said this surge was driven by a significant rise in GST collection from domestic transactions at 17.6%. The average monthly collection for the last fiscal year stands at 1,68,000 crore rupees, surpassing the previous year's average of 1,50,000 crore rupees. The first ever documentary film bazaar is being organized alongside the 18th Mumbai International Film Festival from the 16th to the 18th of June. The government has extended the submission dates of projects for it till the 10th of April. Earlier, the deadline to submit the projects was till yesterday. Information and Broadcasting Ministry said the documentary film bazaar aims to be a first-of-its-kind comprehensive platform designed to promote and support documentary, short films and animation content, showcasing talent in filmmaking, production and distribution. In Pakistan, the Islamabad High Court suspended the 14-year sentence given to former Prime Minister Imran Khan and his wife Bushra Bibi in the Toshakhana corruption case today. The Chief Justice Amir Farooq said appeal against the punishment would be fixed for hearing after Eid holidays. Both were sentenced to 14 years in jail each by an accountability court on the 31st of January for alleged corruption in state gifts they got from the state depository days before the general elections. According to the verdict, Mr. Khan and Mrs. Bushra were barred from holding any public office for 10 years and slapped with a fine of 787 million Pakistani rupees each. In IPL cricket, Mumbai Indians were 114 for 8 and 18 overs a short while ago against Rajasthan Royals at Wankhede Stadium in Mumbai. Earlier, Rajasthan Royals captain Sanju Samson won the toss and opted to bowl first against Mumbai Indians. Tokyo Olympic medalist Mirabai Chanu became the only Indian weightlifter to qualify for the Paris Olympics this year after competing successfully at the IWF World Cup in Phuket, Thailand today. The 29-year-old Olympic silver medalist finished third in Group B of the women's 49-kilogram 11th overall at the event to book her berth at the 2024 Paris Games. Chanu, who is back in action after a 6-month-long injury layoff, lifted a total of 184 kilogram at the World Cup, which is the final and a compulsory qualifier for Paris 2024. In our bilingual live phone-in program Public Speak at 9:30 tonight, we will bring an insightful discussion on ease of filing income tax return with Dharamveer Singh, Commissioner of Income Tax and Chartered Accountant Sanjeev Narayan. During the program, listeners will have the opportunity to pose questions to our guests about filing of income tax return, old and new tax regime, and other income tax filing processes.
To participate, simply dial the telephone number 011-2342-1050 and 011-2331-4444. The Hindustan Aeronautics Limited has delivered two Dornier Tu-28 planes to the Guyana Defence Force. In a social media post, President of Guyana, Dr. Irfan Ali, said the planes arrived at Chedi Jagan International Airport last evening aboard two Boeing C-17 Globemaster military transport planes. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India's defence export crosses 21,000 crore rupee mark for the first time, grew over 32% in 2023-24 financial year. Home Minister Amit Shah speaks to Chief Ministers of West Bengal, Assam and Manipur after storm hits the states, assures all assistance. IMD forecasts more number of heat wave days in most parts of the country until June. In sports, Mirabai Chanu becomes only Indian weightlifter to qualify for Paris Olympics. And in cricket, match underway between Mumbai Indians and Rajasthan Royals at Mumbai. That is all in the news at 9. Good night. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on 90 years legacy of RBI in safeguarding people's interest and mentoring the economy. The participants are Anil Padmanabhan, economic analyst, and Anubhar Rohadge, anchor. The Reserve Bank of India celebrated its 90th anniversary today. Established in 1935, India's central bank has been working since then to safeguard the interest of people and mentor the economy. To discuss this issue, I am now joined by economic analyst Mr. Padmanabhan. Welcome to the program. Thank you, Anubha. 90 years and counting. Can you tell us about the origin of the Reserve Bank of India, its role in the initial years, and its evolution in the last 9 decades? Because this, like you rightly said, it's 90 years old. So it's pre-independence, it's existed. But its role from the beginning has been one to manage the monetary framework within which any economy functions. So whether it is to regulate the banks, whether it is to manage inflation, whether it is to maintain monetary stability. So these core functions have not changed. But post-independence, their role has pivoted as India transited from a planned economy to a market economy. And more recently in the market economy, its role has been further defined, particularly accommodate new economic frameworks that India has pivoted to. And primarily in this, Union government passed this monetary policy flexible inflation targeting act, within which the Reserve Bank of India was required to maintain inflation between a 4 to 6% band. And the rest of the functions have remained the same. And as you know, most recently, it played an incredible role during the COVID-19 pandemic. It took several out-of-the-box options, including giving sovereign guarantee for small-scale lenders, borrowers, which helped enormously in mitigating the economic damage that flowed from the COVID-19 pandemic. So net, it's Reserve Bank as any institution. It's a constant state of evolution, and it is now increasingly adapting to a new framework for what we call the Viksit Bharat framework. So from here onward, we will see more changes in the way it functions as technology shapes India's future. You mentioned the very pivotal role that the RBI played during COVID-19, and I will come back to that later in the program. But you also mentioned the fact that, about the market economy. So in his remarks today, Governor Shaktikanta Das said that over the years, the RBI evolved from a central bank focused on resource allocation during the planning era to an enabler for the market economy. Now, when we look at the progress of the Indian economy and its position in the world today, how significant has the RBI been in making India an economic force to reckon with? Yeah, Anubha, we can't separate the contributions of the Reserve Bank and the Union government and state government. But broadly, you can say that it has been a very, very important variable as far as India's economic strategy goes, and always been like a backroom boy, who's there as a Rock of Gibraltar in holding everything together. But what we saw during the COVID-19 pandemic is the insight into the power and influence of RBI. And please remember, COVID-19 pandemic was preceded by severe financial distress across the banking sector. You had the ILFS disaster that hit the country. So you had series of financial and economic shocks
that were already in play, and then COVID-19 pandemic. So it required enormous maturity, experience, and vision for Reserve Bank to react to such an unfamiliar situation. There's no playbook in how you deal with the COVID-19 pandemic. And here, looking back at the advantage of hindsight, is that I think the Reserve Bank and the Union government came together, and it's not that they're independent institutions, but they calibrated their roles brilliantly, particularly broadly where India in the first phase focused on saving lives, and then it shifted to saving livelihoods. And in both phases, the Reserve Bank of India played a tremendous role. It complemented the Union government, and to the Union government's credit, they have complemented the Reserve Bank of India too, particularly in keeping control over its borrowings, which is what we call fiscal deficit. It has kept it in check. It has brought it down to its committed path. And this year, we were pleasantly surprised that the finance minister announced lower borrowings than were much anticipated earlier. So when we talk about how the central government and the RBI in tandem, tackle the COVID-19 situation, if I talk about specifically RBI, can you elaborate a little more on the steps that the central bank took? Of course, in conjunction with the central government, faced this challenge that the whole world and India was facing. Sure. There are several steps they took, but I will share one step which I think impacted a large chunk of Indian business, which is the small and medium sector. Please remember when COVID-19 hit, the economy shut down, credit dried up. So, the small scale sector, I'm sure aware that they have a working capital problem. So they don't get access to capital easily, and even if they do get it, it's very. So in a crisis situation like the COVID-19 pandemic, when credit dries up, they are the most vulnerable business segment in the economy. So the Reserve Bank of India announced they would provide a sovereign guarantee on the working capital requirements of these small scale sector. Basically, they were underwriting these borrowings. So they provided a safety net for the small and medium sector, and this helped immensely in tiding over this working capital short-term challenge that the small-scale sector faced. And but for that, the economic fallout would have been much more severe, particularly in terms of job losses and, of course, livelihood losses, particularly towards the lower half of India's economic pyramid, that is bottom and the middle class. They would have hurt much more than would have otherwise. So I hope that kind of explains significant role they played during the COVID-19 pandemic, providing a kind of safety net to this country. Yes, of course, that was very well explained, Mr. Padmanabhan. Now, the fact is that the Indian economy, apart from even before COVID-19, because of various global issues and things that happened in the country, the Indian economy and the banking system have had to deal with crises over the years, and they have adapted and made changes each time. So, what are the major structural and policy reforms that have helped the RBI and the banking system to deal with these challenges? Specifically, we talk about the various laws that have been brought in or the various policy reforms that have been brought in. See, there are two laws that jump out which have immensely transformed this country in the last decade. One we just discussed, the flexible inflation targeting. Second is the insolvency and bankruptcy code. This has helped, to solve 9 trillion rupees problem of bad debt in the Indian banking. What was happening was these bad debts were clogging the bank balance sheets, and they were in red. Companies who couldn't repay were going into red. So, it was like a virtuous cycle where one crisis was feeding off another crisis. What the IBC did was, for the first time in the economic history of this country, it took charge of the bad debt problem in two ways. One, it solved for the stock problem. Second, it created a structure where, for the first time, if you went insolvent because of a bad economic decision or a rash economic decision, you are liable to lose control of the company. So several promoter companies changed hands the last decade. There's several examples out there, which tells you that a sea change in India's entrepreneurial mindset happened in the last decade. So to me, the IBC was one huge example of solving for a problem which was inherited crisis and creating a new structure looking forward. So more flexible entrepreneurial ecosystem which facilitates entry and exit on reasonable terms and fair terms. The other is, of course, the inflation targeting, which has given enormous power to the Reserve Bank of India to maintain the Reserve Bank of inflation rate in a band of 4 to 6%. And it's remarkable that they have mostly kept it there.
and taken action either in anticipation or the inflation that we saw in the last 1.5 years was unprecedented because it was largely induced due to external circumstances. Of course, COVID-19 pandemic, supply chain disruptions, and the US Fed increasing interest rates at an incredible pace. So all of that resulted in inflation, not just in India, but globally. So the response is obviously different, but looking back, advantage of hindsight, again, the Reserve Bank of India did a remarkable job in bringing down inflation such highs to the present level. Well, since we are talking about inflation, Prime Minister Modi today in his keynote address at the event praised the RBI's Monetary Policy Committee, saying it has worked very well on inflation targeting. And as you know, the next MPC meeting is due in just a couple of days. So how successful has the central bank been in walking the tightrope and taming inflation in the last few years? Oh, they've done a terrific job because, like I said, what we saw post-2019 is not there in any playbook. I mean, now in future, if such a crisis comes, subsequent governors and the Reserve Bank of India officials will have hindsight and some experience to deal with it. But this was like out of the blue, and it hit not just India, it hit the world. So to react to that in such a timely, mature fashion has been incredible. And it's the reason probably why India has demonstrated such dramatic resilience. In fact, that is now the new catchword in the global economic jargon is resilience. You have seen a few economies, not just India, has shown that. Indonesia has, Saudi Arabia has, and a few countries have demonstrated resilience. And that resilience is the ability to not just withstand a crisis, but to thrive in the crisis. So, I mean, if you had asked me 4 years ago whether India would be clocking 8% plus, I would never have stuck my neck out. But it's amazing, and I think this credit partially or in large respect has to go to the Reserve Bank. So when we talk about RBI, the image of the central bank is of a bank that does not directly deal with common people. But there are steps that have been taken by the central bank, by the RBI, that has made banking a much safer and a more accessible system for the people, isn't it? And also there's also a redressal mechanism which has been streamlined. Can you elaborate on that? The Reserve Bank of India primary role, as like we just discussed, has been managing the economic framework, but it's also regulating the banks. All of us are secure with our deposits in banks or investments in mutual funds because of the stability that is there in the financial sector. Let's take countries like Latin America, which are facing, or Turkey, for that example, which is facing 70% inflation, or Latin America, even higher inflation. The financial sector is extremely unstable. So, it creates a very difficult framework for people to live in, businesses to do business, and whatever else you need to do in an economy, make it take. So the Reserve Bank of India is, by preserving our financial stability, has worked enormously. Secondly, it has moved swiftly. Like I mentioned to you, the IL&FS crisis that hit India could have resulted in a meltdown of the entire financial sector given the size of the problem that was faced. But the Reserve Bank of India moved swiftly and nixed the problem in the bud. Damage was limited. The Retail Direct Scheme by the Reserve Bank of India, which enables retail investors to directly purchase and sell government securities, and that eliminates the requirement for intermediaries. Now, what is this scheme and how important is it? How significant is it for those retail investors, because we see that the number of retail investors in our country is rising with every, passing month. See, Anubha, it's a very interesting and innovative step looking at the future. We all have a portfolio of investments that can include equity, can include debt, can include real estate, can include gold. So now you can also include government securities in that. And why are government securities such a good investment option? They are liquid. You can cash them anytime you want. Secondly, they are government backed. So they are 100% secure. They are sovereign guaranteed lending. And it gives you also a hedge because depending on which bonds you pick up, it protects you in some ways against inflation, and it provides diversity and more stability to your investment portfolio. But the moment it may not be so apparent, but as we move forward, and please remember that the NSSO data on consumption just got released a few weeks ago. It showed that between 2011 and 22, India's consumption trebled across all income classes. Obviously, some more than the others. But
This trend will be sustained because please remember our per capita income has gone from $1,500 to now about $2,100. This will go up even more as the economy grows and wealth gets shared. So as you grow, you're going to look out for an investment portfolio, and the more the instruments, more stable instruments like say government securities, the more stable your portfolio. So that is why it helps that they have opened it. It's visionary. At this point, I don't know the amount of stock that retail investors are holding in government securities, but going ahead, I think this proportion would grow. Thank you, Mr. Padmanabhan, for talking to us. Thank you. You are listening to a discussion on 90 years legacy of RBI in safeguarding people's interest and mentoring the economy. The participants were Anil Padmanabhan, economic analyst, and Anubha Rohatgi, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on AIR. This program is also available on our YouTube channel News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 92890 94044. Kan ngai thlak tak kha chanchin thar dali mi lak chon Akashvani Aizawl atanga puan chua ani hi Akashvani Aizawl ani tuna chuan lemchan hun kan hmanga tunge dik berti thupui mangaram rikon K3P drama club te lemchan ilongai thlawang o Esteri le dictate chan ho chu class card laga chuan an lo ti a thil ti ho ring midang ngei chan lel tu poi chaga ti lo ge chu project kan ti ho ni chuan ama thiang bera kan zo tur ania due date chu engpo lo ni se kar khat chu mi chuan a zwal pui hi chu ti zo man chaga ti ka ti me ti pokan hor deu sek zel chaber ni tu chuan in norway hi nga ya ani ring thona in stress sa nu tu lo nan hun thol ta professor te poi min pe via amwang le rang kha kan kai kop chu hai ve lom ani lo chuan team in pum khatna tak tak lawa ho tling du lo zok ka ti pakhat na ni ringot a chuan team work kha poi mo lom indik ve lokaru kan zum han lawang dar le che tonia kalamu amma next period tu kan off kha professor be kan lo kha ni take mase in pani debate hun chu kan khar to ang thil dang sa yangulen sweater hi tile katum dewa ama kamis ka zor khan sweater teron tinwala yes chal tu theive ri khlau ti lo thon la ke lo story donia reels nen po min kan bia chuan ri na chi model le thei ha lang a chapya di in me thuk zesa ni lo se ka ti du don mi modeling na platform di han kain siam hal mo rem wa mai lovin in theive siamo edite professor appointment kai thei mi lang ye o ke pon ni min khan ka pang huwa nya thanks enge an feedback chai paper le project chung chang ba kan ni lo draft kha min char chwa saka atang kai ve thong me appointment ama in min sam sak ba khi kam hule thawang an ina po kal chi poi ka ti lo a in honga ti chat ai chuan a rin chin pelam malak ve deu mak hi ngai ani chu ma se in lam chun buai ve lo mo an chu kwa te ne an bun te ni ve to sa ma se lo in hon phut te chuan te ro guys lo en teu hi a design vel te hi try tm acha thi Hoseli dan petlom zwa thei a halo ven lo kamu kan net leman chalom chani eklo puzo me don che mi yasi kalila kan tlai dictate to professor office appointment nei tu chuan a luta may I come in sir oh come in take a seat idap solo in hadila hey oh sir remrod dik nge dictate ti du zok ha eng pu poi lao sir kan ning be ve lom dictate ka ti ve meng se ni chuan idap ringot po hi grade A+ ni phani ti thotri ne award limit theng tur hen idea le reference te handa bel le la atha chu ni mai project kha ngei nan oh chalu tu ke kan lungal tu team leader tan hen ka du che hial do chat box ya history team leader ni khana chabel lom sar ju ve la de ne ya thila lam kwa zung zung the ya ma la chak boka ani na space an nei chasya tu ma deep da login zana po kan du to kin kan thok the ya
ke chu chung te ina chung lekha pe zera cholin kan khwa ko ho ve loi du thin box sinen arim lo mai chu ringot chau chu ni lo na chen om ve a mani duanga kal chau hit leader ni na ni lo midang tho ho thiam tirte anta len thau len special thau na te lak chhuat thiam man chhuat tirte mani inda thata kan team te lan sar tir ber hi leader ni na ni a chung quality chu nei tha a ka ot thin em che ni esari kha chu thalo ka ti na ni lovin ani chu meeting e ka soyang a starring ber hi ni le lu tuk thina midang he lu tukalan sar ber hi tha ka ti zo ni lo thin tunge present don shrim shrim cheu sa kan na sheri lo kan vai ni lo pon team leader der S3 chu ni ma yang chu ma se kan present tur chu team in kan jiang lo ka team in kan jiak lo ki ti chuan nang ma ni jiak le don ti na niang mo rem ro di nang ma te hi in pho vela in da hiam reng po hi ni lo nakina chuan na interview te la ne yanga ki thana le tin la ke soi tur te na ti don che sin kan ham ve de wangai to tin na hi chu yes sir kala sheri nang pathian in kim hu tu oma thei tu pathe kan ti lo chang ke ma ni kan ti mai phu mai ne soi moi na den lam pang ai ma chang ni soi chu dik ve thin tho bok sia eng po chu ni se in team chu ko ngai to lo chu nang mai om tho chuan leader po ni lo ma lai ti tur ngai reng ni ti dona in project ma son dan min lo update ve zel don nia in team pum pui po in ka mu se wangai dona presentation in fact tur final draft ne min lo mu le ula in present ma kar khatal chu ni thei se ole sa meeting nei du huna chuan helai ka time table a hian in lo sai mai don nia zo du te nei em o sar zo na chu ka nei tho mai rem chan mi chinai soi ang khan mi in pho lang thiam te mo mi chu chak chau ke tan hen ho tin na ni ngai ni zo na thata ka nei nang ma nge in he zo na chana hi mu chuai lo tum don nia ma se tu na ka soi thei chun chu dik na chu atlowa ma se mani ko nga chuan dik kan in ti vek thrin dik na buk na pakhat chi lo chuan dik in ti theu si in dik lo kan in ti ton le vek si ani sa kalo ni te ke a chan na ke la mu chan ni ka be sai thank you sir thank you dikte khade uni no ti don nia presentation na lo zawa S3 le dictate team chu pakhat na an nia an thiam pathum chuan an lo thu chola iti chalu to ka chian ka chang tu chenia isul ne so boka nang ma wang leo leo in pakhat na kan ni hei ti khan ti big so nang ma ni kha kan ti traffic ka kan thorin vek wang ni in panhin in ti trave ve dikte po behind the scene a chang tu no berinia chan stage cha esteri in ve thunga in bondu ne boss me thlang thiam boka in van ne ta ni oi lo ti le ringot ti kha lo champion boss le ringot do na ni ti khan lo ti thei ve ringot nei ro eng man ni si lo khan voin chu ka lo chi dang cheu in du du nei don ya par ping pong in kan boss be la chu in la brok don box si yes chu ti lai chuan chan dun pani hian an ron pana in team khain van ti cha em ka lom pui lu tuk cheu pakhat na khain pu thia hia oi kan van lom west hair kan ngai sound tuk che present si itu soi te kha chato team leader ni kin sia even ti lom tang chu ni lo wi thiam lo chung chumin gron ti nok no ka ni kha in team te point nang man le che chu an van nei bi ke kan team leader ni ve theila kan ti lu tuka kan ngai sang te me che ne oi ka van lom tang te min lo ngai chu nakina kan lai mu kho manga kan na sui hau don ya hun reng nya la win ole bai phot u bai ole lal ese hi dikte kha isoi lang do ne moni ka tia presentation script zong zong kha zia ve kan ni sia oi a hau oi chu lam ka lo nei to am ya la sorry ka chan anon chong bor box ya min fak ve luam cha ka la ring khan lo lu tuk nen nang ma hian ti thabe thau thau ania eng po chu lo ni se o sei dik cha lo eng ma sorry ti ne tu om lo shim shim le rin se bo ka hian kam tam tle na min pang me ni he o ni mol ho trong lo khan vei toila ni mei ka lang u yes boss vo in tu shia beng the na tura ka lang u pa ngai ka class kan mun ber ni der to sin exam kan ne nga chu po kan zau ra lo no ya kan hun ni to nya o ti zong khan ka ngai to du lo lui lom ka lungai lu tu khi nia voi na chu kan kal lo na ngai ya thil kan ni ve don nia ka vangai don tak em heng hun te lo le don to si lo wa ma se an wa zong in nei to la wila graduate ni wa po kan mureng don lom nia chani suyang khan so ta
Peng khen ma mi kan kal chak chin na ke wa khan va kalang u ka chi don zeu ka ti to kha. Yes, Dictate chance a hopo chatakan graduate nu kumnga lia meu chuan Esteri chu college zir lai dang tinen NGO dinin zir lai te le meichia te ham channa turin thil tam tak antia mun sang sanga state po na le ram danga thengin thu soi tur po in an som kwala shia ta tho le rina po in sum do da chang thung tak alo ne ya dictate po na chete chel chungin atam theyang berin Esteri nen chuan an thok dun boka. Hello, Kachian. Kazal fel chu ni me. Kaman me. Kanin mudonya, kalau chak hal, kanin pe fel lu kanye, kung ka kal felanga kalau chak theng hal. Anin hu na tur mu na chuan Esteri chuan laptop a thil type chungin dictate chu alo ha ka. Milau ha ri to Ri lo we, ri na po lo ka man me thenia kan lo in ba chawa. Avan cha ni zana kha chuan a inti boy hlesa. Kanin hu tur po ka shil vel talawa. Nya tel lo tuk kha vi ka hlau dewa. Pe vui le na saluk luk don lut tuk. Aron kal man ka ring lawa ka va soi ve me me ya. Man lo tum ve le sia anau dor ngak tu kha lo ho le to tia. Chu wangin dar khata kanin hu don ka ti taringot. Tu na so pa khale chan ve chang ni ma se. Ingi zia thil dik lo omami. Pol thil mo le. Kan pa he kan soi felok ngai uma. Iron king shim em document vel chu. King vike hey ese ngai po phek som vel chu ka ziak theya. A chai mi chia dunya ni soi fel ngai chu soi vat tia. Ni kuma project ina tur paisa even no changa kan don kha man ban la om kha. Engza changi balance kha. Nuai li singyat sangruk zakwa hey sum report po ka ron ken tel hi. Kha khamo mang bang lo nga kan inja ngai ni chani kan pola kaw ni lo ya kaw na shi thawa ngoi te ka van shi thiam lo ve nge soi tum tuna funding kan dil tum he adina tur ese poi ja zo to hi ka ngai to changa muna agency kan nei don lo lu tuka mil shot ka nei box si lo ma se ama kan mu to tho NGO te tana dil thar le the hi kan muna agency chazok fe in ka sham ma se har sen na thei chu man ban sum kol kan nei chwa min pe ka ring mia lo man ban lo ning kan in soi me ngai don ni chuan se ja sa po ja thatia ngai don chuang lo tlem mi lo ti dang lam me nga ka ngai to a tuna balance lo le kan mu le thei tu kan bel khom chuan student som thum ta ram danga conference mang turin kan thum chuak thei don sin paisa bang kha kan return chuan kan thei don si lawa thil tha lom kan man don Kachan sui vela imoi ringa idu dan divak lawa mi ente tuna in hachete nei te hi thongai to don hleinem mi somthum kan thun thei chuan ang hetin UN on wai office peng pakata hian president na min thlang don chiang sa a nangma ka shwai tel chi anga in khoma kauchina in mang lu ringot lo hian kovel zaw zo kai kal don alom itan po chatu ni chu in nei to ro he ui la ringa chu lo lang der aban gun ma em Hello. Inge dar khat ti sin wa ma si ve. Khuta kani te na ka kal tlang photang ala ma sia ka lo ti nia. Lal mo nin dora tang min lo awa. In lu dei to ti lo so ya. Min thi min tum nge nang ni hi in wat se ve. Nya ke ka lo man ma sia document vel in tek tu rom tho si nen. Lal chani lo chwak lo ve thau ne min ron join ni hi. Lal dik che te. Hey, remra dik. Inge sia in wam lo nge dam lo mi. Ôi thiếu cả lâu ngày toàn biên lúc tụi mình phát sorry lúc tụi ở chỗ la mình mấy bốt đầu khan xung đôi hàng sập ta ít trông cái rủi nhỉ ha Che tôi tệ mình được order san nem Inge này đủ Anh này tụi tiền ea him taka anh kom bor lai chuan dictate chu ri runwa min om thei lawa ma se atilang lo shama a chian te pani po chuan an shethiam big lawa Esteri ro chuan a rukin amel zewa Henu hi voin hi amu ta dik lo riau hi than thum dan a ta chok le to zok nge Nhìn nộp có tìm ạt xoạc pa mình đang hít vào chất về là mấy tệ in veng la mak lo kal don thau kalo thlam che in lo theng chu i lo bu vel reu nge nang hi lâu nhị tặc chu chả véo mấy mình thả thấy choan lâu tràn bôi lâu em hey documents này essay vel po hi lâu có túc chỉ mấy la zana cái nhìn khom xoáy nhìn nền hồ hai chi po cái nhìn lâu ti ta in khom zan te hi vat tam tak
กันน่ะโทนตัวหุ่นชาจงจ้องอินความไว้ฉลายที่พวกกันขอแล้วนี่เบลที่จะรู้โอ้เลยเฮ้ยเราเฮป้าที่จูอินขาที่เงี้ยหรอชนน่ะตัวอมทุดอาจารย์ชนเจ้าตัวไอ้หนับไว้สิจงตุยเตะตัวบกเสียวบ่อยติละมาจวนตัวมาข้าสวยเวสูเอ้กี้อีจิงถอดที่มาจังอีหมดแข้งที่มินิขัดปอดาอลลวินอินโหค่ะเวกค่ะจงใจในหุ่นตัวปอดาอลพัลเอ้ยลูกค่ะจงใจเฮาไอจวนรำตาลกระถมซะได้หลอมประธานถูกกระติดิกโซเด้อีจงใจเจ๊อีมาลงหลังเต็มซูอีจงใจเกมปวดตำเวเด้อไปแมวอุ้เนจวนแล้วอีย่าก็หลังดิกเตออินลัวกดซูอันเชงอ่ะอุ้ยแล้วเสเตก็ลงลุกตุกกระตาที่จวนลุกเชียวลุกส์ก็ลุดเวลกโดนไอ้หลายพาหลวงที่รออุ้ยเวเตียมยาวที่จวนอย่าฟังเราคุยเองโอ้จงมุ่งเบลเราเลี้ยงมันเวกว่าหันโอวัดตะเกียโอ้งั้นจริงเออินเอาข้ายุ่งปุยโตแล้วว่ามีนังมาจีน่ะมีองเชียโอ้อันนี้ก็จบแล้วเวียนนี่ค่ะอุ้ยเฮ็ดจ่าพิสสักลุกตุกที่จูแล้วที่เวเตตาละให้ทักตัวนี่ที่นั่งกับพวกเทนนิสค่อยเตเนปี้เนมลุดเฉลวันนี้ฮีตาละฮีข้าอันนี้ไม่หลงข้าเราลุดรอกะปี้เราเลี้ยงรอกันไม่เตะที่เป็นเส้นทางเอโกดริงสิดูโกดริงส์ที่ไม่รอไปเราตักก็ไงตีฉัดเราวางอันนี้ก็เรารู้รีสอร์ทกันชุ่มสองคันโอมานี่เองสวยเตะอินลาฟิงเซียโมตักsorry อินวันที่เราเนี่ยตัวริงกับเรามาเสียเราตุ๊มีดังส่วนนี้เส้นเฉียงเตียวเรามาเซ่การันรัวมินหูมาอินเมลคาดิกเวนี่นางเพจูอีที่ดังโดนเนี่ยมันนี่ก็ติมันอารมณ์เตะจังเอสเทริเราเล่นเวมาจังอินกันอินโกมาก็ฉันนูไอมาอินกับอุณานูอินยาก็เทตัวเพียงที่หลังเขียงเราไม่แล้วก็ไงสักวิเชลมก็เชียลมวินก็ลมนุตุที่ฮันมาเดวินก็ออกมาชุ่มก็ไอซุ่มตู้เบรกันนี่ไงมานี่อินเตก็หันโลอวิโลกก็อินคงไงมาเรียวก็อินเชียจังโปฮันนี่เราฮันมินติทำวางนุตุกันยามาเซอุยตัวนั้นมีให้จุดสวยจีนี่ติพวกก็เชียเราก็รินเราวางจีนี่เราวินสิก็ผัดสันติพวกอังก็จะพิเศษตัวสุดดิกเตก็สวยชงไงอันยังพิเศษเราเห็นไว้ตั้มตะคีเอสเทริโซเคียนกับบุลาอินการที่สวยงามเนี่ยอินเทียมเรานั้นสันตัวประคัดมาเราเนี่ยมิงสิเมียวก็เราง่ายท่าอิเชียน่าดูพออินสวยจวงเรามีดังอาศิลโดนเราบอกก็งอยรัลเวไม่มีชินาลมก็สวยอมเสียจูทิลฮีง่ายซีเรียสเทลุตุก็ตีน่านี่จูอีสวยบอร์เททิลปุยอันนี้เราก็เฉียนดูอันนี้กันมาไงเรื่องอารมณ์เนี่ยดิกเวรนจูบ้ากายซุ่มโดนนั่นลำปังแต่ก็ช่างปุยนี่ทุรนก็มาหมดทั้งไหมไงดันจูก็เสียงฟิลโตทั่วมาเซทุรนลักชิมนี่ชาเร่งอารมณ์จังตับโซกันนี่ฮีเอ็งเราเนี่ยที่ลมดันซงสุดิกเตจวนรินจูอชิลตาก็รินังโตกเวลนี่เอสเทอร์วันสังคิมิจูอลวันเตนอมตะเกมเอ็งอ่ะเตะจามจะจวนเอ็งยังไงโอ้อีมันสีแล้ววะอีเชียนูอีพังไงนะเฮียนอัติมิตเตลเวกเจนี่ฮีก็อีกันกันไล่อาจังอีเทียมนะพังเจลินันนี่ฮีอลอนกายอัตไตมาอัชวนอมเตเมลมาเซจอยมวยนะมีมาอเปกเวงไงแล้วเจฮีจ้าสมงายตั้มมาฮิจูอิติเวกลมตัวมาหูเราละมานังมิงลันดูเราลุตุเราต้องเจ้าเฮเลเจนอินินเรมไม่นี่ฮีตัวน่าจวนทุนไหนนะ power อันนี้ฮีดูโตอาทิระจังไอเบงaccount ปอยซารันดาลุเทียร์โปอังไอตัวเข่งพันเวกอันนี้ไม่ลมปอยซาบวยยมเซดิกโลเซนังมาสินโมปูตูร์มันตูร์ทุบวยในตูร์เชื่อเทียมตัวเอ็มรีนี่ปอยซาเขา transfer เล็กๆก็เราตุ้มชิมนะพวกเราการคุยเสียด้วยกับบอยท่าวางเห็นเกมาเก้านาดาลูค่าติดตัดตาขานยาอันนี้เราจินบ่เร่งเล่นมาเซมันโจฟิกอังอินโปรแบงสเตทเมนต์จังสวายหลังฟิกดูนึงจูวางจูเรามีเรื่องอันนี้มั่วกันโปรแบงสเตทเมนต์เขาสับมิดตัวโจจูนิเซียเกมาเก้าสเตทเมนต์นี่เราวินโอ้ยเนี่ยเราไงตัวทุยเนี่ยเราชุดเฟลฟิกอันนี้มั่วมาเซมินตาอดที่จูตุ้มบิ๊กจังกับเรื่องเราเรื่องตุ้มบิ๊กเลยตัวน่าจวนมาเซบวยยมเซนังมาลงบวยตัวอามาเตจูอฟินิมเทคกันนี่ไหมอีตุ่มโตอังเง่ขันยาaccount Apple ซุ่มบางจูก็ transfer เลียดเวกละนังมาเบง account statement ปอจูเป็ดละอินน้ำหน่อยตัวสูติดขบเพียนอิตาเลียจงอีเปียอินโพลตันหัวปอนี่ละวินหุ่นโอเร่งนี่ละวะ
choi moina ham thatna le hing thatna zong amana hui le vek thosi chula sui thik ei silo i thiam thei nen khwa tlai ma hian nadang thazok exam turin zerzok la tha ni mei ani pon chu a thianu inia amangai che ni chuan ati tir ngam tur che ni Merin restaurant da chang to khan karil win ka chung chai chara ka ngai dan ka sian fel ni karil lo lang war chu tu kina bible chang ka lo cha hei ka chin cha ge kan chia range thil chalau ti tu te wangin in tilungai du su la fel lo ta ka ti te chu ot hek su lo bet angin a thu kin nanum thwayanga nimshing angin an vai don sia lalpa churing la thil cha te ro hera ma hian omla rin omna zel ro pathian in ka chong chai na chop le chigin min chan na ni hi sum dik lawa om chuan engpo ni se ka chung te ka u nau ti ngei po ni se ka in rol du don lo shim chu esi po na shia ti ka shia ti kho phiang kan in kom dia khamiti pui tura min som ngam kham mak ka lo ti zo to pa tu na khan wa ngai to thiam che min som ngam zo kha ni makati ber zo chu ka bing mup na chan po ni zo ka lo thu nei na lan sarna du lu tu ka a zela a sha lo line ma na mi tha thil phal lu tu sumpo duam lo khan adai thuk zel don zong ani hi thlengsa anin ngai to wangin tiang mi reng hi chu an dik lo na po hi dikna an pom to thlat si tu na po paisa du ngor ai chuan president ni na dream wang ani atingama hi du don lo ti po a shereng chunga nor lui che power adu lu tu kina timitel chandon to ni hi masemo ka shilang che tu na hian mi ta na thil thati atum wang zo kamwal pho po hwama in pe pum tu ma ai ngai mak don yo mana kan professor ka zo na ha ka she chuak ta suk mai a chan na chu ka she chun zom zel don ani hi ngoi te rin tu na hian net banking ka ti thawa poisa chu ka transfer le ngalanga inkhom bana ka hal don ti fel fatangai ka chan na hi esi chuan hak shima nia he ta cho ka yanga dora chuan ka kal to lo me yang kana hi fel tho loin khar fel mi ro se inkhom la ka lo hak chenga inkhom ban vele ka phur phe yang che janin chu ina bum ve nge do na ti kha in bedonia ka lo lu don lo la sha ti ina khan ka lo omanga khodona min lo shilla ka lo tha liam che min hu dun lo kha thazo oi sumdong pa thwak nge wa han chachim tak em thileng kim hi ti ol samani hi ka lom nu tu kan ya orin a thonin ka ti don reng lo dora po min pui angai le trep to sia ka ton lok che ni hi oi ham be se na hi bo le chi rong bo lang ar tui kang la tok mai cho me zinga ka siam lo ka tui le ong na sia ngoi mai te in khom ba na chuan dikte chu esteri te na chuan aluta in chunga thianu ru ma chuan alut lang chawa tlai la local don ti dikte chuan soilok veka esteri po alo lom hle a khuyang ei on iba du ma mi ka lo chuan le chan iba in khom la rin ain soi tu ro deu mi e je zok ni tak tu ro tu pui zer zan nia ding kan kem dewa ka be shi de thairan mu chin te de nuam top se lai ka bu fu a ga lom zia chu person ka ni hi a rong ka du zong ta ka nya ni hi na tu ka khatu soi tu ka lawin en me ka he ka ja sa hi min en sakla min ti dik sak nga la ka tia i lo ka don tho sia ni chu ti nge bu soi toi the ve inge dai lo siam to em i du don lo ti chu ka sha ka chan ma se i ru hi ti zau de turin ka shil ma sa du che kaushina zim de min manga pathian thu zim de min ngei to a zau zo le a hlok zo ka ram ta nam hala ka tu chu chuan a dal thina lom ka soi kha mi som thum ka sponsor tin thei chuan report and break don engmai min dal don lo khi ta ka nom don nang po idin huni som he to don tu pilar don ania kan pot po mizoram me ni lawin india ram ngo a min tluk tu dang om don lo itel du lo chuan engma kan ni don lo nia o nang ma in hat doi jep te hian chile chu tangi o ngoi rim lavin soila pool account da kan sumban ban sung ka transfer to inga iti tak takem ilaw ba han na sa em kanunga milaw phasan ni mo Paul bank statement of Wivik don ti tu sha tu ro ka dream zong song iti chani hi ti ko phian ka siam lian cha ka unaw ti ai pun ka mangai cha ka lot li na phian ka chom pui cha midangi din hun lo a kan pola om du an tam zia hi an poisa po do nei du zo khian na sin nom du nang
isum in sen po compensate ngai zok je di ka da chang chang che a ma son tum lau pe mishing hi ka lau vurin ka lau da poi mo che ni hi nang ang din huna hian midang hi ding se mo khia na cheve te thoka ka ocean pakhat jim te boy em lavin khovel zaw zo ka sun wan nei to ang a ching to le khya pathian ring ni hi amma ka thu soi te ngai thavi phut la ka du zong le ka tum te min zot ngai em le si jin ka nei ve thau sin ma se kan din huna in an lau hi I du to ka poisa man turi ne ya tho chwa poi ngai lau I du na a then vel duin sum le zalin nai ne lung ke chwa kan na hu apiang ka chung te tan ka tho nga ya I she chiang lu tuk chu ke aya chung zok le talen nga zok midang ta na in pe zui tlak ni in ka ngai chia I che dik lau de nia ka ngai poi ni ha ve e mani hi ka tia ka pom dam zel chin chu wang chang ka theina zong song in ka support em zel che ni hi ma se ka man le man lau te ka du zong po min zot ngai mi chung chui da poi mo ve ngai em du zong nei ve si chu hemi kum za da po tin le hian lo mi om min chana ka pek chop chenga in tu ma shat lo le mu lawi ni bi ruwa e khop to ki thok chwa ka om lawila society a hian thil chati po i nei nang kaushan thil vel chwan lama phan bak lo chu kapola hian eng ni na ma nei tlak po i ni lo I ti du hi mo nang aya mi chatak tak in pe phur em an tam lu tuk tlat engma ni sila kan ichapo ma dikber hian in ngai khanglang le ngal ka tu soi poi oi du hek law ui le khwa nge kali tum ma lo le ro tan cha tu ma mi dikte chuan a ngai thak thei to lo awangin trap chungin atlan chuaka rina a phone in an thlen meu chuan a din hun a that lo em awang chuan ama riak chi ni in rina chuan a shelowa dikte ka zan hu te chu a phone saka am patni chuan an ria puita a tha lo rala e seri chuan voi tam tak dikte chu biak tumin arong kola ama secha dikte chuan a chang to ngai lo pathian thumangin na satakin dikte chu lo chang liana anei chun pathian chu ber data e seri po angai dama a hongai lo ma se an kong a sang to ani ti chu chia takin a sia a apoma a thatna tura engkim le saktu pathian chu a ringlat ani hi alo liam hu chuan dikte in lua chuan omna benga arong bol puite an lo pung khom lai leya hey kan kim thokat to boka hun ser lo mang ta meila kan local khom chan chu kan chewanga hey kan chan dikte hi karma sa mai khan MCS officer a injia klingte kan chewanga chu ama hian engdang ma ti ma in karong bol puite nen lom thu soya lom ho ka du phot ani atia achung te nen polom na official takin an la nei lawa arong bol puite hi angai poi mo ber cheu ani ama hi han som phot te ang soidu ani nge yang le ronin di thelu tuk lo sela in fui na chu takena o alo ding ma sa kha hau phot ga duwa zanina ka rong bol pui le ka chante milom pui tura in lo pung kho mi kalom em a hen kan chunga thil lo thleng te hi pathian na tho amal som na wang chukuni thil chalo nia kan ngai kan to lai po in kan chunga pathian thatna chu alo ngai reng chin eng din hun ma hi cha kan ti emo achia kan ti emo kan top na tur ani lawa ke pon pathian thuang chu selin malam ka pan ka tum sel do ani theinia kan ngai lai te tling tok nia kan ngai lai te dikber chakber nia kan ngai lai te hian chan pui ngai ber mishing kan lo ni reng zoka ma se kan sak lo zial kan shiat na hun le he khovela rin chan tur pakhat ma anom lo na huna chau hian pathian thil ti theina chu ashinga shana lo langin atum dik tak chu ti puitlin lo ni chin ama khan he min sot nuala ka chung te helama anon pem ma chu he in hi ka lwa reng dona ka in son don lawa mun danga min da ma chu he kauchana hian pathian rong ka bol sel don ani ama saberin pathian ma kan sawain keima ni kaushan khutlang le ramta lo chung chai walang u dikte na bang ina lu chia chu rina akol ngala o rin ibayem e chachu wina thil makto kutonga ka shi ngal chengai o ngai thapod ro zinga office ka lu tur ha esteri pona milau ha kringa o ni e khami thlen nu khan kan vui khat in hu le na nya an pol an lo mwal phau de nya an poisa man dan le mian bu man lo nei angin an thang me ka o nui kha ngai lo ngai tharo kan department why NGO funding om kha ron di la du a minon bia a
ô in tin nghe cái tirina cái mà in cái bé mò cái bé lâu ngót thầy lấy ném officer đang in tìm mà xe đi lấy ném fair tech in cần thang tu rồi nè ô chuan cần meeting à cần hu deuh lúc à anh Paul anh mual phao she mấy anh tia mi dang khan anh tlang ha la cái chuan proof po lawa thil tha tak tak te po an ti hlo thling to china selection round tal hi chu pal tlang ve se ka ti ve sham chung khanin adu tu sun kha ka ni box ya che ni mai la ka ti tlang thei bik to lo ril ru pe che su o alai nat mit tu atlom doi mai pathian nen in tung ngi se ka ti ni ka chong chai pui mol mai ka ril ruin e chuan pathian rem ruat na chat zia hi she du em kha pola khan hun lai zong song khan langsar takin lawin mangila chuan tuna hian kamal photel dan tur hi min pai thadu tu ten man ruan mang chatang chu khang lai zong khana phena kalau ha thil chatak tak kalau ti hlo thing thin ma se she tu suna tan pathian hi lo tok zia hi mo an pola ka tel chin ti sia se mo vo ina nge khan pathian laka ka thiam sam na tur po in meeting ma ama ka chan na thu te po kha ka soi chuak ngam nya lo wa dik che en kimi pathian hi ala sha alo huwa alo buk ton chin amarin mai hi til dik suna lo ni dikte chuan hing takin pathian ma ching chin lom thu asoya mana professor ne na azona min pho lang thiam te mo mi chu chak chau te tan hian hlotlin na ni in ninga yem ati kha a chana chu a mu chuak ta mani dik in ti chau ma se midang hu dik thei chuan si lo na khowela hian dik pakhat chia chu lo te meu mei pathian ani ama chia hi dikna bul le to pania atlai ngai lova a hun taka ani dan tur takin alo thlen tir thin mishing siam chop le ruat chop dikna lem hi chu alo vatlo lo thin em kan ngai thlak ta kha tunge dik berti thupui mangaram rikon KTP Drama Club te lemchan ani Akashvani Aizawl atanga puan chua ani hei hi Akashvani Aizawl chanchin thar langsar zwal ilongai thlang u Prime Minister Narendra Modi a chuan khovel thil thlengin ram anghong nat lo nan kumsom lo om tur chungin e bar zon na rama in todel atul ati Voina Reserve Bank of India kumsom kotlin lomna Mumbai aneya he thu hi soin pu Modi a chuan Indian banking sector mason dan chuzir tham ani ati a akai shwai sarkar malak na awangin bank ten ma anson na sa ti soin kumsom chungin RBI poin ma ason ani ati RBI kumsom kotlin lomna hian Union Finance Minister Nirmala Sitharaman le Union Minister of State for Finance Bhagwat Kishan Rao Karat le Pankaj Chowdhury te po antel ani Delhi ko chuan Delhi Chief Minister le Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal chu tun thani som panga thleng judicial custody om turin ati pu Kejriwal hi liquor policy scam a sumche rel thu boy awangaman ani a tun thani somni pakhat khan Enforcement Directorate ED 10 an mana ED te kuta a om thei hun chung atop nuwa vo in khan Rose Avenue Court a special CBI judge Kaveri Baweja chuan pu Kejriwal hi ED te kuta om chun zom turin arel ani Union Home Secretary Ajay Kumar Bala chuan tunlai technology thar awang hian ven hin nalama chawna thar asiam don ati a Voina Bureau of Civil Aviation Service BCAS din voice som thum pariat na he thu hi soin pu bala chuan technology thar artificial intelligence AI global positioning system GPS jamming drone le internet lama swal na sang te hian har sat na asiam chhomek atia technology thar mangtang kai BCAS chu in toy thar tur le thei top choa ven him na lama tran la turin asom ani aviation sector lama ramin mason na chak tak anei mek ti soin kumina po kumdang ayana sa in athang lon atia mason na rural in din chhomek te hian ven him na lam anghong chat lo nan malak ani atibok ole chuti zong chu tun tumata na chanchin thar langsar zwal Akashvani Aizawl atanga kan puan thei te chu ane hei hi Akashvani Aizawl ani tuna chuan lengzem lamoi tak tak kan ngai thavele thunganga malsom tluangi fana in zun phur thingtin par le khotlang li le ai ti hla sakhian kan hun in than tiang zun phur thingtin par le khotlang li le
chiang em zunphur thingtin parle khotlang li li aimal som tluangi fanai sak ani Rebecca la lom sangin di boite ti la moi lungrun lutuk tak mai sakhyang kan hunin chun zom ti ang RJ sangte yo hi hai rwal ani lo duty nomle o min lo ngai thazel ro RJ sangte even play moi ve zan ria chok hei chun chin de wani mo arkela lengza wa kan ngai thla le tur hi tan usangte next sai play le tur kha itan liao liao o chuan muan puyi te chung kwa tan isakale ruti tanu fa enan ronte ne moi lutuk di boite Rebecca la lom sang isak ani asak ming meltra ti in kan hun chun zamang mal som tluang I fa nai
grila hian kum tluang chenin ilui long nge ilui lo rebeka la lom sang isak ani nun rong mel trang ei me hang kan hun in chun zom vele thung tiang la lungmona changte in tan o Lendun huntur dona Limte ahun le ni kaman lai Man chati a in chena true to see amo Tin layana Silva dai real min chân san atan kapallo te asi nun rong mel tra kalundu le sua pasang ma se nun rong mel tra la lungmona chang te sak ani khuan rot lo di ma son tlong e fa Boy
lo ani kan ti chuai rai mai ani he dro khwan ruat lo di ton zet zong anani hi ma som tluang I fan a yani moi lung run lutuk tak meron satu kha ti chuan zanin atana kan hlan nu ber tur lo di le tareng mai khamol lo chin le mai kan hlan nu ber tur tan chuan o ma som tluang I vekin hoi lo par lo thlia veng che ti la sakhyang kan hun in ti top te ang hoi lo par ma som tluang I fa nai sak ani kan ngai thak tak kha ole chu ti zong chu zanin leng zem la kan ngai thak the te chu alo ni le ta hei hi Akashvani Aizawl ani apong tu si ro sang le ani control room engineer duty larin chana Akashvani Aizawl min ngai thatu te kenen chuan mangtha kanin te lo hun le ta a FM Gold Dali milak chon kan ngai thak chun zomanga ti chuan nak tu jing daruka kan hun nga ya min lo ngai thlale theu don ya min ngai thatu zong zong te mangtha vek ule